संगे अछंती एथरकर लोकसभा प्रार्थी तथा एमपी कैंडिडेट कैप्टेन मनमथ राउत राय महोदय। सर्वप्रथम अनुरोध करी। धन्यवाद समस्त को प्रणाम जनाऊँ। एक स्वर में कहवा दी हाथ टेकी जय जगन्नाथ। आम समस्ते आज आनंदित आम भितर माननीय मुख्यमंत्री प्रतिनिधि एवं जी आम 5T सचिव बीके पांडियान जी आसछन्ती समस्त जोर गोटे करताल हुड़हुड़ी देके आम स्वागत करवा। आम सहित आमर प्रिय माननीय सांसद आम सहित कैप्टेन मनमथ राउत राय जे प्रिय सांसद अच्छा गोटे जोर करताल हुड़हुड़ी दिंतु। आमे आमर समस्ते आमे जानिचे आज आमे कहीं उपस्थित अच्छे आम समस्त कॉर्पोरेटर भाई भौणी निजाम भाई आरंभ कर सब कॉर्पोरेटर भाई भौणी मैंने माँ माने गुरुजन माने समस्त को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ जोड़ हस्तर प्रणाम करछे। आमे समस्त जानिचे आज ओडिशार विकास करछि किए जोरे ओडिशार विकास करछि किए आमे से समस्त संकल्प नवा जे आगामी 25 तारीख दिन दीटा शंखरे विपुल संख्यार मोहर मारी जययुक्त करने सहित ओडिशार जो प्रगतिर रथ चली से रथ को आगे नापे आम सहित बीके पंडियान जी आम सहित अच्छा जी कि अध्यक्ष महोदय एवं सी ओडिशार अग्रगति पे अनेक काम आज कर ओडिशा को लेकिन भारत नुहे पृथ्वी में पहुंची पार्टी एवं आमे तांको सहित नहीं आज भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली रे चारिआडे शंख बाजिब एवं आमे सांसद प्रार्थी एवं विधायक प्रार्थी विपुल संख्यार मोहर मारी जययुक्त करने यही संकल्प नवा एवं यही विजय यात्रा आरंभ करने जोड़ स्तर आपण समस्त निवेदन कर वक्तव्य सांग बंदे जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोटे जोरदार करताली हवा दरकार एथरकर विधानसभा प्रार्थी तथा एमएलए कैंडिडेट श्री अनंत नारायण जेना महोदय परवर्ती अभिभाषण अनुरोध करी एथरकर लोकसभा प्रार्थी तथा एमपी कैंडिडेट कैप्टेन मनमथ राउत राय महोदय को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समय टिके कम टिके लेट चलते आम अधिका शुणा चाहूचे श्री बीके पांडियन को तो मुझे खाली अनुरोध आपण मानकू जे सबुठु सुंदर जगह मुझे कॉलेज रे थी सबुठु सुंदर जगह 9 नंबर शहीद नगर आपण समस्ते की स्वागत आपण समस्ते के एतिकी अनुरोध जे एबाजी आपण श्री नवीन पटनायक सम्मान रखिबे ना नहीं कौन रखिबे ना नहीं मते कहतु माँ माने कौन भाई माने बहुत बड़ संघर्ष बहुत बड़ लड़ई बहुत किछि करी करी की बहुत अपमान सही सही जाएंगे पहुंचे मु चाहूचे अपमान रो प्रतिशोध नबार अच्छी प्रतिशोध नबा कि 25 मे रे 2 थर आपण माने शंख को देबे मोर एटा विनम्र अनुरोध आपण मानकू बहुत परिश्रम करिछु आमे बहुत चेष्टा श्री नवीन पटनायक अपेक्षा रे अछंती जे से सम्मान जो 2019 रे आमे हरैछे से सम्मान तांको हमकु फेरे आनिबा से फेरे आनिया पे कि आपण को ऊपर भरोसा करछंती आपण मिशन शक्ति ऊपर भरोसा करछंती आपण युवक मान को ऊपर भरोसा करछंती आपण समस्त बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रो सबु भोगी मान पर भरोसा करछंती जे सेवा करछंती सेवा बदल रे तांको आपण माने आशीर्वाद देबे बेली से आशा करछंती से आम गुरु बहुत किछि करिछंती ए 5 वर्ष भितर एते अधिका काम करछंती को राज्य करि पारनी विरोधी दल सदाबले बदनाम करिया चेष्टा सदाबले श्री नवीन पटनायक विरोध रे काम सदाबले श्री बीके पांडियन विरोध रे काम आमे तांको एमिति उचित जवाब दबा बराबर जवाब दबा जे आगु को 24 वर्ष पे कि सरकार करिया पे कि सपना भी देखिबेनी एभलिया जवाब दबार अछि मु तो लड़े रे अछि श्री अनंत नारायण जेना लड़े रे अछंती आशा करछि आपण माने हम परिवार आमे जेति की जोश रे लागिछु लड़े रे आपण माने समस्ते समस्ते सेति की ही परिश्रम करिवे आसंदा 3 दिन पे कि सम्मान रखिबा श्री नवीन पटनायक ना बढ़ेबा बिजू जनता दल रे सम्मान रखिबा। जय जगन्नाथ शंख चिन्ह रेडी तो मरी चलो
जय जगन्नाथ। प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने किछि प्रश्न पचारबी आपण मानक उत्तर बेसिस रे मु तापरे मोर भाषण रखिबी। आपण मानक भितरु केते लोकक पाखरे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड नाही हाथ उठांतु। कार्ड नाही 20% लोग थिबे ठीक अछि। और गोटे प्रश्न आपण मानक भितरु किए किए निजे आपण मिडिल क्लास बोली कि बाबुछंती हाथ उठांतु। मिडिल क्लास 80%। ओके मु प्रथम रे मिडिल क्लास कथा कासछि। गोटे राजनीतिक दल मिडिल क्लास उपरे चिंता करिकी तांकर मैनिफेस्टो रे मिडिल क्लास पे किछि रखुछंती। एटा होछि बिजु जनता दल। आपण मैनिफेस्टो देखिथिबे 4-5टा बड़ा जिनस रखाई। आपण मानकर मतामत मांगितलु किछि किछि मिडिल क्लास बंधु माने मतामत देइतिले सर आपण सब बेले गरीब लोक मानक पे करछंती मिडिल क्लास के भी किछि करिवार अछि। आमे भी तो भुवनेश्वर रो अछु आमे भी भुवनेश्वर रो उन्नति रे लगी पडुछु। भुवनेश्वर मिडिल क्लास ने लगी आम प्रिय मुख्यमंत्री कौन कौन रखुछंती। प्रथम रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड किए भी पाई नाहंती समस्त बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड पाइबे। नंबर 1 आपणकर हेल्थ सिक्यूरिटीटा स्वास्थ्य सुरक्षा आम प्रिय मुख्यमंत्री देबे। एटा कौन सी राज्य रे है नहीं कौन सी देश रे भी है नहीं। मिडिल क्लास पे स्वास्थ्य सुरक्षा कौन सी देश रे है नहीं। आम प्रिय मुख्यमंत्री 4.5 कोटी ओडिशा वासी के तंका परिवार बोली की बाबंती आपणक पे करछंती। 1 नंबर। 2 नंबर आपण मानकर सबुटु बड़ा समस्या थिबो मिडिल क्लास रे घर कोंडे किनिबा। घर किनिले बैंक रो लोन नेबे। लोन नहीं कि सुद दबाक पड़िबो इंटरेस्ट बड़ी बड़ी की चलिबो। आपण को एइतिरे सहयोग करिबा लगी सारा भारत वर्ष रे प्रथम थर हाउसिंग लोन मिडिल क्लास परिवार के मान्यवर मुख्यमंत्री सुदक कमीबे इंटरेस्ट सबवेंशन देबे। कोटी है नहीं कोटी भी है नहीं सबु जिनसो बीपीएल कार्ड दारी की देबार तला। किंतु आम प्रिय मुख्यमंत्री मिडिल क्लास भी इंजिन ऑफ ग्रोथ गोटे शहर गोटे राज्य आगे के बढ़िबार अछि मिडिल क्लास रो भूमिका बहुत रोची। सो 2 नंबर हला फर्स्ट स्वास्थ्य सुरक्षा सेकंड घर किनिबे आपण को सुद कम दबाकू पड़िबो इंटरेस्ट सबवेंशन देबे 20 लाख पर्यंत। नंबर 3 आमे कौन पे आमे सब बेले चिंता करूछु जदि मोर पुओ गोटे बड़ा कॉलेज रे एडमिशन पाइला तांके फीस दबाक पड़ुछि 5 लाख टंका फीस दबाक पड़ुछि 3 लाख टंका फीस दबाक पड़ुछि। मु कोउटरो आनिबी आपण एजुकेशन लोन नेबे। एजुकेशन लोन नेले एजुकेशन लोन रे मध्य आपण इंटरेस्ट सबवेंशन पाइबे मिडिल क्लास। हाउसिंग लोन रे भी इंटरेस्ट सबवेंशन पाइबे एजुकेशन लोन रे मध्य इंटरेस्ट सबवेंशन पाइबे। 3-4 नंबर आपण का और कोतरे बेसी खर्चा होउची सब बेले जिबा आसीबा करिबा बस रे जिबा ट्रेन से आम सरकार अंडर रे जो भी बस थिबो मो बस कुअंतु लक्ष्मी बस कुअंतु किंबा मेट्रो आसीबो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे मिडिल क्लास मध्य सब्सिडाइज रेट रे जाई पारिबे। एमती 4टा और 5 नंबर को मुआसी आपणकर पिला छुआ भी कॉलेज रे पढ़िबे पीजी पढ़िबे यूजी पढ़िबे। ओडिशा भितर किए भी कॉलेज रे ओछंती से माने जो भी कॉलेज रे तांतु गवर्नमेंट रे एंट्रेंस अनुसार जाइतिबे तंक पुओ पिला मानक 12,000 टंका प्रति वर्ष मासक 1000 टंका पाइबे। से कॉलेज रे एडमिशन नले मासक 1000 टंका पाइबे। जियो पिला मानक 14,000 टंका। आपण मानक मुंड ऊपर आपण देखिबे मिडिल क्लास मुंड ऊपर जो भी बोझ होची ना आपण घर लोन नेबे पेमेंट करिवाक पड़िबो एजुकेशन लोन नेबे पेमेंट करिवाक पड़िबो जिबा आसीबा करिबे पेमेंट करिवाक पड़िबो। हठात बापांगर हार्ट अटैक हला हॉस्पिटल के नेबे 5 लाख टंका स्टेंट पे दरकार पड़िबो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड रे आपण पाई जिबे। देखंतु आम प्रिय मुख्यमंत्री केते चिंता करूचंती आपणक लगी और कौन सी राज्य करू नहीं देश करू नहीं।
आपण मानकर पाली एबे आम प्रिय मुख्यमंत्री आपण माने आशीर्वाद करंतु जो भी भल काम आम प्रिय मुख्यमंत्री करने चाहते तांके सशक्त करंतु आपण मानकर आशीर्वाद रे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे पुणी आम प्रिय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करिबे कौ तारीख रे करिबे कौ तारीख सारा ओडिशा जानुची 9 तारीख रे आम प्रिय मुख्यमंत्री पुणी शपथ ग्रहण करिबे कल्ला परे प्रथम दस्खत कौन करिबे बिजली बिल के छाड़ करिबे बिजली बिल के छाड़ करिबे ओडिशा रे तिबा 90% परिवार उपकृत हबे बस्ती रे तिबा सबु प्राय सबु बंधु माने भाई भौणी माने पूरा बिल ही पाइबे नहीं 100 यूनिट पर्यंत तो बिल पाइबे नहीं 150 परे और कंसेशन पाइबे आपण मानकर जो भी खर्चा होउची ना सेटा का आम प्रिय मुख्यमंत्री कम करने चेष्टा करुछंती आपणक मुहरे टिके हास फुटैवा के भल लोग ना अन्य पट आपण देखंतु बीजेपी 2014 रे कहितिले आमे केमता कासिले तेल दर कमिबु कमिला की पेट्रोल दर कमिला की डीजल दर कमिला की और कौन कमी बापे होची डाली दर कमिला की मां मनकर एलपीजी सिलेंडर दाम कलमिला की बड़ा बड़ा कथा कोइले मिछ कथा कोइले बड़ा बड़ा स्वप्न देखेले हैला की किछि आपणक मुंड ऊपर थिबा बोझ के आम प्रिय मुख्यमंत्री कम करिबे गरीब जनसाधारण साथी है कि ओचंती मिडिल क्लास रा साथी है कि ओचंती चासी भाई भौणी मानकर चासी आम प्रिय मुख्यमंत्री युवा पीढ़ी मानकर साथी आम प्रिय मुख्यमंत्री आपणक समस्त नहीं कि आपणक सशक्त करिकी नुवा ओडिशा गठन करिबा स्वप्न रे ओचंती आपण आशीर्वाद करंतु हमर आनंद बाबू एवं मनमत बाबू का आशीर्वाद करंतु शंख चिन्ह रे वोट दियंतु गत थर भुवनेश्वर वासिंदा टिके छोटिया भूल कर देले आम प्रिय मुख्यमंत्री एते परिमाण रे आशीर्वाद पाई नहंती एतर हबो की आपण बाप मु गोटे कथा कहबी जने सांसद कर्तव्य कौन स्पेशली राजधानी गोटे राज्यर राजधानी सांसद कर्तव्य कौन सारा भारत वर्ष रे भारत सरकार जो भी बड़ा बड़ा स्कीम अच्छी से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आनिबार अच्छी टेक्सटाइल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क सॉफ्टवेयर पार्क आईटी पार्क एमएसएमई पार्क रोजगार बढ़ाइबा पे जो भी भारत सरकार पकड़े स्कीम सब अच्छी सेटाक भुवनेश्वर का आनिबार तिल्ला कर्नाटक राजधानी अच्छी बेंगलुरु मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल सेठी भी बीजेपी रा सांसद माने वचंती प्रति सांसद 40-50 हजार कोटी टंकार प्रोजेक्ट आणुचंती तांकर राजधानी के आमर सांसद केते हजार आनिले आपण जानचंती 4.5 वर्ष किछि काम कले नहीं निर्वाचन आगुरु मु बहुत दुख रे कोई भी निर्वाचन आगुरु वोट नबा लगी मंदिर मंदिर रे बुलिकी वाटर कूलर बांटुचंती एटा गोटे सांसद काम की गोटे सांसद काम गोटे सांसद भुवनेश्वर सांसद एटा गोटे राजधानी ओडिशा राजधानी नुआ ओडिशा गठन करिवार अछि भुवनेश्वर वृद्धि हबार अछि कैपिटल रिंग रोड आनिबार तिला जदि आपण कैपिटल रिंग रोड आनिबे ताले भुवनेश्वर और बड़ी बड़ी की चलबो कोटी नुआ रास्ता आसीबो सेपटक भुवनेश्वर बड़ी बड़ी की चलिबो भुवनेश्वर बड़ी बड़ी की चलिले कौन हबो एटी आपण माने जमी किनिबाक बहुत कष्ट रे ओचंती बहुत दाम अधिक हो गला जदि भुवनेश्वर बढ़िबो एक्सपांड हबो ताले सेठी आपण घर किनि पारिबे जमी किनि पारिबे गोटे शहर जदि बड़ा हबार अछि ताले रिंग रोड बहुत निहाती जरूरी रिंग रोड कोटी आसीबो सेई जगह रे शहरटा बढ़िबो केंद्र सरकारंकर अंडर रे आसुची कैपिटल रिंग रोड
गोटे इट्टा पड़िला नहीं 5 वर्ष रे इट्टा पड़िला नहीं कोटी भुवनेश्वर को आपण 50 वर्ष आगे कि नब्बा अपेक्षा 100 वर्ष पछक नहीं गले आम प्रिय मुख्यमंत्री एबे डबल काम करवाक पड़िबो आपण समस्त डबल काम करवाक पड़िबो 5 वर्ष गोटे छोटिया कथा नुहे गोटे राजधानी लगी अन्य राजधानी केते स्पीड रे काम करचंती आम प्रिय मुख्यमंत्री अंडर जो भी अच्छी कलिंग स्टेडियम कहतु हाकी ये कहतु जो भी अच्छी मेट्रो राज्य सरकार अंडर रे नाही तथापि आम प्रिय मुख्यमंत्री मेट्रो आनी कहीं मेट्रो आनी जदि मेट्रो आनिबे मेट्रो जो भी जगह रे चलिबो से सबु जगह रे डेवलपमेंट आसीबो नुआ घर आसीबो आईटी पार्क आसीबो कंपनी आसीबो होटल आसीबो रोजगार बढ़िबो एटा वची उच्च कोटि चिंताधारा जाइकी वाटर कूलर बांटिबे 5 वर्ष परे वोट पे वाटर कूलर बांटिकी बुआ बुलाइबा के चेष्टा करिबे सेटा ठीक नुहे जणे आईएएस ऑफिसर तिले कलेक्टर तिले मु भी भुवनेश्वर वासिंदा मोर भी एक्सपेक्टेशन तिला मु भी जणे वोटर बहुत दुख लगिला फेल मारिले आशा करिबु आपण माने मनमत भाई के आशीर्वाद करिबे से दिन राति आपण मान पे लगी पड़िबे ये संसद प्रार्थी संसद रे जाइकी भुवनेश्वर सोर उठिबे ए आजिकार संसद तोरे उठेइचंती मते एटा दरकार संसद रे गोटे कागज मते देखांतु जाइकी लडिली मु लडिकी ए प्रोजेक्ट आनिली भुवनेश्वर लगी गोटे प्रोजेक्ट आनी पारतिबे 5 वर्ष रे ये लडुआ पुओ लड़िबे आशीर्वाद करंतु ए 2 जन का आशीर्वाद करंतु नुआ भुवनेश्वर गठन करिबा आपण समस्त आशीर्वाद रे एटी बसितिबा बंधु समस्त मोर अनुरोध आपण जने जने सैनिक और 100 वोट करेबे आपण वोट देबे और 100 वोट करेबे आपण मानकर पिल्ला छुआर उज्जवल भविष्य लगी आमे लडुचु आपण माने सहयोग कले आपण मानकर पिल्ला छुआ भल भविष्य पाइबे एटा ही आमर गोटे उद्देश्य जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने बहुत टाइम हला अपेक्षा करछंती और गोटे प्रोग्राम अच्छी केते मार्जिन रे जीतेबे केते मार्जिन देबे वार्ड कारपोरेटर मान कहते केते मार्जिन देबे मोर अनुरोध रहिबो और किछि देखंतु नहीं शंख चिन्ह को देखंतु मान्यवर मुख्यमंत्री चिंताधारा को देखंतु ओडिशा का आगे के बढ़िबार अछि आपनकर प्रत्येक वोट तांका आशीर्वाद दबो नमस्कार जय जगन्नाथ मध्य भुवनेश्वर रे कार्तिक पांड्यान प्रचार यूनिट 9 मिराकिल ग्राउंड रु सीधासलख चित्र आप देखुले जो से अनेक गुड़िए कथा उल्लेख कले मिडिल क्लास बा मध्यवित्तों पई जो 5टी बड़ प्रतिश्रुति बा नवीन ग्यारंटी जहां बिजु जनता दल निज घोषणा पत्र देछि से संपर्क में उल्लेख कले कार्तिक पांड्यान आउ सबुठु बड़ कथा हला आपण 20 लाख टंका पर्यंत गृह ऋण पाई परिबे एवं तार सुध मध्य कम रहिबो पिलांक पाठ पढ़ा पाई जो लोन नेबे एजुकेशन लोन से सुध कम रहिबो बिजुली 100 यूनिट पर्यंत मागणा 150 यूनिट पर्यंत सब्सिडी ताठू अधिक मध्य नेले आहुरी सब्सिडी पड़िबो सहरांचल लोकंक पई पानी और जलठू आरंभ करी अनेक गुड़िए कार्यक्रम संपर्क में से उल्लेख करुथिले। अप्पा ए कौन ग्यारंटी फेरेंटी समस्ते ग्यारंटी कथा कहउछंती एटा कौन आम बड़े लोक मान को किछि अछि तो बापांकर ट्रीटमेंट हला तो हाँ मागणा रे ता भी पुनी बड़ हॉस्पिटल रे हाँ पा टंका टी भी खर्च हेनी बस सैया तो नवीन कर 5T रो गारंटी BSKY कार्ड द्वारा 700 रु अधिक हॉस्पिटल जुआड़ भी हो 90% ओडिशा को आज बिना मूल्य रे चिकित्सा मिलुची बुझिलु झिली सिंपल कथा आम ओडिशा रो गोटिए ग्यारंटी नवीन कर 5T ग्यारंटी नवीन को 5T रूपांतरण रो ग्यारंटी आम चिन्ह शंख चिन्ह रे 2 थर भोट दियंतु बापा सरकारी चाकरी
आमे साथे थिले एई हाथ जे अवस्था बदलई देबो सकाळु खोलिले आखि प्रगति प्रगति आपणार अति ओठ चाहे मन चाहे जासुआद नीति क्षीर दही लसी घी घरे घरे अति प्रिय गोलाप जामुन रसगोला पनीर रसीला संज बेले सांग मेले जमी जाए खटी प्रगति 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 प्रगति। हेलो प्लस 2 एग्जामिनर आईएएस ऑफिसर हेबाकु चाहंती कि तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु +3 टीचिंग सह बाजीराव आईएएस एकेडमी द्वारा कोचिंग पांतु कॉल 9438782020। डाक्टर बाबू एटा मांका ऑपरेशन रो टंका सेटा हे जाईछि आउ टेस्ट रो हे जाईछि आउ औषध अरे भाई हे जाईछि मोर आउ भी पेशेंट देखिबार अछि भाई तू कोन करो छु एठी किया बसे 25 लाख पर्यंत चिकित्सा भी फ्री आमे साथे थिले एई हाथ जे अवस्था बदलई देबो Wonderla, India's largest amusement park chain, now in Bhubaneswar. Bookings open. I am a world skill champion. I am an automobile expert. We run startups. Industry 4.0 is here. I am a proud mariner. Welding is my passion. We are robotic engineers. Home away from home. CV Raman Global University, Odisha. Homegrown, world class. OSL is a trusted service provider in different sectors across various industries. Our expertise in achieving and delivering the best. It's not just a habit, it is a way of life. OSL Group. आईनीगत एमएसपी नेबार अछि बड़ बापा साररू जीएसटी हटेबार अछि और ऋण भी छाड़ करबार अछि बड़ बापा निजो फोन रो बटन दबाइबा छाड़ और हाथ रो बटन दबा हाथ जे अवस्था बदलई देबो Dreams University, where possibilities are limitless. आपणक स्वास्थ्य और सेवा उद्देश्य रे आमे 24 घंटा आपण मानक सहित और आपण मानक सेवा रे काईकिना आमे बुझीचु सेवार महत्व भुवनेश्वर उपकंठरे आमे एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल हाई टेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर। मासिकिया खर्च तालिका देखिबा गैस घर सौदा बिजुली बिजुली बिलटा काटी देलो जे हां कि बिजुली बिल पर नवीन बाबू देबे नवीन बाबू देबे माने माने बाजुची शंख आसुची जुलाई बिजुली बिल को कहिबा बाय बाय। ओडिशार 90% परिवार को 50 रु 100 यूनिट पर्यंत बिना मूल्य रे बिजुली आम चिन्ह शंख चिन्ह रे 2 थर भोट दियंतु। सकाळु खोलिले आखि प्रगति प्रगति आपणार अति ओठ चाहे मन चाहे जासुआद नीति क्षीर दही लसी घी घरे घरे अति प्रिय गोलाप जामुन रसगोला पनीर रसीला संज बेले सांग मेले जमी जाए खटी प्रगति 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 प्रगति। Admission opens for +2 science in Ganesh Higher Secondary School at Bhubaneswar and Chandikhol. Smart classroom, doubt clearing classes and hostels for both boys and girls. क्या खुशबू है यार, कल से वेज नॉन वेज इसी में बनाओ। भारत मसाला, the taste of new India. Wanna be an IAS officer? Join TATASky Gurukul, the best boarding school. For +3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438782020. Wonderla, India's largest amusement park chain, now in Bhubaneswar. Bookings open.
पिले आमे शिखिबा भाषा स्वाभिमानर आत्मनिर्भर हेबो भारत एकता हेबो अभिमानर आत्मनिर्भर हमे अरे वाह केमति कुआडे जाउछन्ती हां मु भी आत्मनिर्भर हेबी किंतु केमिति लुहा तंबा खनिज सबु मिले एई धरा गर्भरु एते आशीर्वाद मिलुछि एई धरार कण कणरु प्रतिटी प्रयोजन अमर जेबे पूरा करि पारिबा आत्मनिर्भर भारतर आमे सेबे मुण धुआ पकाइबा आत्मनिर्भर कृतज्ञ आमे एई धरार जी आमको देउछि एल्युमिनियम स्टील रूपा जिंक तंबा तैल आ गैस परि वरदान कोण आमर धरार एही आशीर्वाद को आमे देश सेवा लगी करिबु अर्पण देशर आवश्यकता पाई आत्मनिर्भर भारत पाई वेदांता बापा सरकारी चाकरी आमे साथे थिले एई हाथ जे अवस्था बदलै देबो Dreams University, where possibilities are limitless. नमस्कार दर्शक बंधु आसंता मे 25 तारिख रे देश में षष्ठ और ओडिशा रे तृतीय पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित होब ओडिशार 6टी लोकसभा यह सहित 42टी विधानसभा निर्वाचन मंडल में भोट ग्रहण होब सबु राजनीतिक दल प्रचार शेष पर्यायर पहुंचले कारण 23 तारिख संध्यार प्रचार शेष होब संबलपुर ढेंकानाल केन्दुझर कटक भुवनेश्वर और पुरी संसदीय क्षेत्र ए अधीन 42टी विधानसभा निर्वाचन मंडल में भोट ग्रहण होब बीजेडी बीजेपी कांग्रेस एवं अन्यान्य दल माने सेमानकर कैंपेन को जोरदार करिसेंती एबे सभा शोभायात्रा अपेक्षा जोरदार हेउची डोर टू डोर कैंपेन किए प्रार्थी देखि वोट देबो बोली कहूची तो आउ कहार मत हैला आमे विकास सहित रहिछु ए सब को नै केमिति चलीछि बा केमिति रहिछि निर्वाचनी परिवेश आज यहाँ उपरे चर्चा प्रथमे नजर पकाइबा कटक लोकसभा आसन उपरे कटकर लोकसभा आसन एवं ता अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र गुड़िक उपरे जोठी आसंता 25 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो कटक रे तृतीय पर्याय में 25 तारिख जोठी बड़म्बा बांकी आठगढ़ बारबाटी कटक चौद्वार कटक कटक सदर एवं खंडपड़ा नयागढ़ एवं आउ सबु हेउची आपणकर कटक विधानसभा निर्वाचन मंडली लोकसभा निर्वाचन मंडल ये 7टी जाक विधानसभा निर्वाचन मंडल आसंता 25 तारिख रे भोट हेबो कटक पर आपण आसंतु या परवर्ती जो लोकसभाटी रही आपण भुवनेश्वर विधानसभा आसन जयदेव भुवनेश्वर मध्य भुवनेश्वर उत्तर भुवनेश्वर एकाम्र जटणी बेगुनिया एवं खोर्धा ये सबु आसन खोर्धा जिलार एवं भुवनेश्वर ये सबुगुड़िक आसंता 25 तारिख रे बा तृतीय पर्यायर एठी भोट ग्रहण हेबो तापर जदि आपण देखिबे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र अधीन रही 7टी विधानसभा जो विधानसभा आसन गुड़ी निर्वाचन तृतीय पर्याय 25 तारिख रे हेबो एगुड़ी कहला ढेंकानाल हिंदोल कामाख्यानगर परजंग पालहड़ा तालचेर अनुगुल आज जो शीर्षक रही से मध्य 42टी जाक 25 तारिख रे 42टी बा सबुठु अधिक आपण देखिले प्रथम पर्यायर 28टी द्वितीय पर्यायर 35टी तृतीय और चतुर्थ पर्यायर 42 एथिरे आपण ये संबलपुर लोकसभा आसन है ढेंकानाल पर आसीबो संबलपुर आपण देखंतु एथिरे उपकूल रहउची मध्य ओडिशा रहउची एवं पश्चिम ओडिशार किछि अंश रहउची संबलपुर कुचिंडा रेंगाली संबलपुर रेढ़ाखोल देवगढ़ छेंडीपदा और आठमलिक अनुगुल जिलार देवगढ़ रेढ़ाखोल संबलपुर रेंगाली कुचिंडा ये 4टी जाक संबलपुर तेणु संबलपुर देवगढ़ और आपणकर अनुगुल जिलार निर्वाचन मंडली को मिसाई संबलपुर लोकसभा क्षेत्र जो आसंता 25 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो आपण तापर देखंतु संबलपुर परे जो लोकसभाटी आछी ताला पुरी 25 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो
पुरी रे पुरी ब्रह्मगिरी सत्यवादी पिपिली चिलिका रणपुर नयागढ़ खोर्धा जिलार चिलिका एवं रणपुर एवं नयागढ़ जिलार पिपिली सत्यवादी ब्रह्मगिरी पुरी ये चारोटी जाक पुरी जिलार तेणु पुरी खोर्धा एवं आपणकर जे देखिए नयागढ़ जिलार ये पुरी संसदीय क्षेत्र एमानंकु नहीं गठित तेणु पुरीर लोकसभा निर्वाचन आसंता 25 तारिख में अनुष्ठित और 4 दिन पर एठी मध्य ए 7टी जाक विधानसभा आसन रे भोट ग्रहण हेबो तापर जे देखिबे केन्दुझर केन्द्रांचल बा आपण ताऊ कहि पारंती किछि मात्रा रे उत्तर ओडिसार एवं जो आसन गुड़िक रही ये संपूर्ण भाव में तेलकोई घसीपुरा आनंदपुर पाटना केन्दुझर चंपुआ एवं करंजिया अधीन ठाकुरमुंडा चंपुआ सीट रही केन्दुझर पाटना आनंदपुर घसीपुरा तेलकोई ये सबू आसन आप देखु केवल तेलकोई आसन को छाड़े आपंकर ये घसीपुरा आनंदपुर पाटना केन्दुझर चंपुआ करंजिया आपंकर केन्दुझर लोकसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत 7टी जाक विधानसभा निर्वाचन मंडली आसुची आसंता 25 तारिख में भोट ग्रहण हेबो अर्थात संबलपुर आपंकर केन्दुझर कटक पुरी भुवनेश्वर ये सबू आसन रे ढेंकानाल ये सबुठी आसंता 25 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो एबे आसंतु नजर पकाइबा किए कोठी प्रार्थी अछंदी बा काहार काहा सहित प्रतिद्वंदी चलिथि 2019 अपेक्षा 2024 निर्वाचन अत्यंत रोचक एवं एटी हाई वोल्टेज प्रचार हाई वोल्टेज लड़ई एथि कारण केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी रु प्रणव प्रकाश दास बीजेडी रु नगेंद्र प्रधान कांग्रेस रु जानी आपण माने सांगठनिक संपादक बीजेडी प्रणव प्रकाश दास निर्वाचन लड़ुंट धर्मेंद्र प्रधान एवं नगेंद्र प्रधान आम तापर संबलपुर पर केन्दुझर लोकसभा धनुर्जय सिद्धू अच्छा सेठू धनुर्जय सिद्धू अनंत नायक विनोद बिहारी नायक अनंत नायक पूर्वतन सांसद धनुर्जय सिद्धू बीजेडी पूर्व से निर्वाचन लड़ी विनोद बिहारी नायक कांग्रेस टाणुआ नेता तेणु केन्दुझर में जबरदस्त फाइट देखा मिली ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र देखिए अविनाश सामल एथर बीजेडी प्रार्थी होती डाक्टर अविनाश सामल रुद्रनारायण प्राणी पूर्वतन सांसद बीजेपी एवं सस्मिता बेहरा जी पूर्व कांग्रेस सभानेत्री थे सांसद प्रार्थी कांग्रेस करी तेणु ढेंकानाल भी त्रिमुखी लड़े आप देखिए बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस तापर कटक रे जो देखिए कटक एथर एक रोचकपूर्ण लड़ई देखुची कटक रे डॉक्टर संतृप्त मिश्र अच्छा जी बीजेडी रु आपणकर भर्तुहरी महताब बीजेपी रु सुरेश महापात्र कांग्रेस रु भर्तुहरी महताब से पूर्व सांसद थे कटक सेठू से बीजेपी रु एथर लड़ुंट संतृप्त मिश्र जड़े उद्योगपति भाव में जड़े समाजसेवी भाव में परिचित रही पूर्व से आपणकर ग्लोबल सीईओ थे गोटे बड़ मल्टीनेशनल कंपानी ता परवर्ती समय सुरेश महापात्र कांग्रेस निर्वाचन अभिज्ञता रही तेणु कटक रे एक रोचकपूर्ण लड़ई देखा मिली आप आसबे भुवनेश्वर रे एथर खूब जोरदार टक्कर बा फाइट कारण मनमथ राउतराय को बीजेडी एथर प्रार्थी करिछि कैप्टेन जड़े कमर्शियल पायलट भाव में यथेष्ट परिचित रही एवं जड़े मनमथ राउतराय कैंपेन स्टाइल जहाँ बर्तमान आपण मैंने देखुं भुवनेश्वर रे से मध्य संपूर्ण नियारा भिन्न रही अपराजिता षडंगी जी 2019 निर्वाचन जीति द्वितीय थर पर बीजेपी एठू टिकेट देछि एवं अपराजिता षडंगी पूर्वतन आईएएस अधिकारी जिलापाल रही कमिशनर रही से एथर द्वितीय थर पर निर्वाचन लड़ुंट एवं यासिर नवाज जी छात्र कांग्रेस सभापति तथा कांग्रेस गोटे चेहरा भुवनेश्वर कहले भूल हेबनी एथर दल टिकेट देछि युव चेहरा तेणु भुवनेश्वर रे एक प्रकार बड़ फाइट देखा मिली अपराजिता षडंगी मनमथ राउतराय एवं यासिर नवाज ये भुवनेश्वर चित्र आप देखुते आप देखिए पुरी को पुरी रे एथर संबित पात्र अरूप पट्टनायक जगन्नाथ पट्टनायक पुरी रे सुचरिता महांती को प्रथमे कांग्रेस टिकेट देला प्रार्थी से लड़ाई इच्छा प्रकाश कले ना से जगन्नाथ पट्टनायक कांग्रेस प्रार्थी देला संबित पात्र गत थर निर्वाचन लड़ी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से निर्वाचन में परास्त होते पिनाकी मिश्र पाखु एथर दल पुणी थे टिकेट देछि आपण अरूप पट्टनायक से देखिए बीजेडी रु से पूर्व भुवनेश्वर निर्वाचन लड़ी एथर निज जन्ममाटी सेवा करने आगक आजु जनता दल से निर्वाचन लड़ुंट ये सबू कथा आप देखुते संबलपुर केन्दुझर ढेंकानाल कटक एवं आपणकर भुवनेश्वर पुरी ये 6टी जाक संसदीय क्षेत्र आप सीधासलख चित्र देखुते आप कैंपेन जो देखिए सबुठी जोरदार प्रचार जेहेतु शेष पर्यायर पहुंचलानी पुरी रे अरूप पट्टनायक संबित पात्र जगन्नाथ पट्टनायक पुरी रे त्रिमुखी लड़ई संबलपुर लोकसभा आसन कथा देखिए प्रणव प्रकाश दास बीजेडी धर्मेंद्र प्रधान तांको बीजेपी एथर टिकेट देछि आपण जो विजुअल्स रही जो प्रचार रही आपण ताको मध्य आमे देखि परिबा कारण आज परे आउ मात्र गोटे दिन अर्थात 22 और 23
ये 2 दिन प्रचार 23 तारिख संध्या को प्रचार शेष हेबो सबु राजनैतिक दल सेमानकर प्रचार अभियान को जोरदार करिसेंती केउठी बाइक रैली चली तो केउठी डोर टू डोर कैंपेनिंग चली केउठी प्रार्थी दलर अन्यान्य समर्थक एटी पिपिली आप देखो रुद्र महारथी से तांकर प्रचार अभियान को जोरदार करिसेंती एवं आउ केउठी जो माने प्रार्थी अच्छी से माने जेहेतु शेष पर्यायर निर्वाचन आसी पहुँचे आ मात्र 2टा दिन अपेक्षा तापरे प्रचार शेष हो तेणु प्रार्थी मैंने बर्तमान डोर टू डोर कैंपेनिंग को अधिक गुरुत्व देउछंती बा घर घर बुली प्रचार कार्य से माने अधिक मात्रा सामिल थिबा देखा मिली एवं तृतीय पर्याय निर्वाचन में 42टी आसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी रही जदि आम या पूर्व कथा देखा बलांगीर कंधमाल सुंदरगढ़ सब शेष हो जाए आस्का षष्ठ पर्यायर विज्ञप्ति आपड़ जो देखिए जहाँ मे 25 तारिख पर भोट पर एप्रिल 29 प्रकाश पाई आम सीधा सड़क भाव में विधानसभा को आसवा जो 25 तारिख में 42टी आसन रही संबलपुर क्षेत्र को आसवा संबलपुर में कुचिंडा कथा कहतु रेंगाली गोटे पर गोटे आसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी रही से किए विधायक प्रार्थी अच्छा विभिन्न राजनीतिक दल ताकू देखिपर संबलपुर रेढ़ाखोल देवगढ़ छेंडीपदा आठमल्लिक ये आपणकर 7टी कन्स्टिट्युएंसी रही संबलपुर कुचिंडा जो राजेंद्र कुमार छत्रिया अच्छा रविनारायण नायक अच्छा केदारनाथ बरिहा अच्छा आपण ये 7 प्रार्थी बीजेडी आप देखुं संबलपुर लोकसभा क्षेत्र जो प्रणव प्रकाश दास बिजु जनता दलर से लोकसभा प्रार्थी सहित राजेंद्र छत्रिया कुचिंडा रही सहित सुदर्शन हरिपाल रेंगाली प्रसन्न आचार्य रेढ़ाखोल रोहित पूजारी संबलपुर रोमांच रंजन विश्वास देवगढ़ सुशांत बेहरा छेंडीपदार नलिनीकांत प्रधान आठमल्लिक ये संबलपुर लोकसभा क्षेत्र 7 प्रार्थी और लोकसभा प्रार्थी हेले प्रणव प्रकाश दास बिजु जनता दल संबलपुर पर आपण आसतु आपणकर ता परवर्ती ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र ढेंकानाल रे अविनाश सामल अच्छा सहित सुधीर सामल महेश साहू मुकेश पाल ब्रज प्रधान संयुक्ता सिंह प्रफुल्ल मल्लिक नृसिंह साहू सुधीर सामल ढेंकानाल महेश साहू किंदोल प्रफुल्ल मल्लिक कामाख्यानगर निर्वाचन लड़ुंट नृसिंह साहू परजंगरू मुकेश पाल पालगड़ू ब्रज प्रधान तालचेरू संयुक्ता सिंह अनुगुलू महेश साहू पूर्व सांसद थे एथर से हिंदोलू विधानसभा निर्वाचन लड़ुंट अन्य समस्ते दल पुणी थे भरोसा कर ढेंकानाल पर आप देखिए कटक संसदीय क्षेत्र कथा कटक लोकसभार संतृप्त मिश्र हेले सांसद प्रार्थी बीजेडी देवी मिश्र बड़म्बा देवी त्रिपाठी बांकी रणेन्द्र प्रताप स्वाई आठगढ़ प्रकाश बेहरा बारबाटी कटक सौभिक विश्वाल चौद्वार कटक चंद्रसारथी बेहरा कटक सदर सावित्री प्रधान खंडपड़ा जड़े महिला प्रार्थी को दल टिकेट देछि खंडपड़ा आसनरू एवं तांकर जो देखिए आप सावित्री प्रधान जड़े समाजसेवी भाव में जनाशुना प्रकाश बेहरा को दल एथर टिकेट देछि बारबाटी कटकरू अन्य समस्ते देवी मिश्र देवी त्रिपाठी रणेन्द्र प्रताप स्वाई सौभिक विश्वाल एम समस्त विधायक अच्छा एम दल पुणी थे भरोसा करे निमापड़ारे आप जो देखिए कटक संसदीय क्षेत्र कैंपेनिंग निमापड़ारे जो कैंपेनिंग रही ये कटक संसदीय क्षेत्र आम जिते तथ्य रखुते ये निमापड़ारे बिजु जनता दलर जे प्रार्थी जोरदार प्रचार करिसेंती जो माने दलीय संगठक दलीय नेतृत्व एम समस्ते प्रचार अभियान को आगे को बढ़ाई घर घर बुली प्रचार करुछंती विभिन्न स्थान में दृश्य देखा मिली प्रचार बिजु जनता दलर जो माने प्रार्थी से माने घर को घर बुली गाँ को गाँ बुली प्रचार करुछंती बिजु जनता दलर ये विभिन्न स्थान कैंपेनिंग आप देखुं ये सब आगामी पर्यायर जोटी जोटी निर्वाचन अनुष्ठित होगा जाऊँगी से प्रचार पाई एबेठू जोर धरी परिवेश एवं आम सीधा सड़क आसवा विधानसभार जो जो एसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी रही विशेषकर संबलपुर कथा देखा संबलपुर रेंगाली रे राजेंद्र कुमार छत्रिया आपणकर सुदर्शन हरिपाल नाउरी नायक दिलीप कुमार दुरिया मुझे रेंगाली विधानसभा कन्स्टिट्युएंसी सुदर्शन हरिपाल बीजेडी नाउरी नायक बीजेपी दिलीप कुमार दुरिया कांग्रेस संबलपुर विधानसभा रोहित पूजारी बीजेडी जरण मिश्र बीजेपी दुर्गा पाढ़ी कांग्रेस जरण मिश्र से विधायक अच्छा प्रसन्न आचार्य बीजेडी रेढ़ाखोल देवेंद्र महापात्र बीजेपी अशफ अली खान कांग्रेस एवं सीधा सड़क जीवा लक्ष्मी सागर को जो बीजेडी प्रचार करुछंती दलर स्टार प्रचारक कार्तिक पांड्यान सर्वप्रथमे आमर प्रियर विधायक प्रार्थी आम प्रियर बुनु भाई बा श्री अनंत नारायण जेना महोदय को अनुरोध निजर लोकों पाखरे निजर कथा रखिबा पाई निजर अभिभाषण व्यक्त करबा पाई अनुरोध बुनु भाई को पाई गोटे जोरदार ताली हे
धन्यवाद समस्त को मो मंच पर जोड़ स्तर प्रणाम जनाऊे कारण ए अंचल वरिष्ठ नागरिक माने माँ माने युव बंधु माने एवं आम सहित अच्छा 5T अध्यक्ष VK पांडियन जी एवं आम सहित अच्छा आमर प्रिय सांसद प्रार्थी कैप्टेन मनमोहन राउतराय महोदय एवं मेयर महोदय सबु कॉर्पोरेटर भाई भौणी माने एवं उपस्थित हुआ समस्त भद्रमंडली समस्त को मु एक स्वर कहबी आम प्रथम जोर गोटे करताली होलोली देखिए आम स्वागत करवा VK पांडियन जी महोदय एवं मु आज आपण को अनुरोध करी आपण मैंने आज विशाल संख्यार लक्ष्मी सागर मेलन पड़िया उपस्थित अच्छा तार उद्देश्य होचे आगामी 25 तारीख आपण मानकर ओडिशार विकास कर्णधार होती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज जे ओडिशार परिचय सृष्टि करचंती खाली भारत वर्ष नुहे आज पृथ्वी में नहीं पहुंचते ओडिशार किंवदंती इतिहास रचा जाऊँगी जहाँ आम भविष्य इतिहास पढ़ा एवं ओडिशार किंवदंती जहाँ आज 77 वर्ष स्वाधीनता पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक गोटे पर गोटे अध्याय करे ओडिशा को नहीं भारत वर्ष पृथ्वी में पहुंचते सहयोग करते 5T अध्यक्ष VK पांडियन जी आम समस्ते करताली देवा से भाया जुगान्तकारी पुरुष आम संग रहिले ए ओडिशा विकास हम भारत वर्ष भर 1 नंबर राज्य हम एवं आपण मान समस्त को मु जोड़ हस्ते निवेदन करी 25 तारीख ये लक्ष्मी सागर झारपड़ा बमिखाल एवं लक्ष्मी सागर हाउसिंग बोर्ड हल्दी पड़िया आरंभ करे आमर बुद्धेश्वरी कॉलोनी एवं चिंतामणेश्वर कॉलोनी सबुआड़े शंख फुटब शंख बाजिब एवं विपुल संख्यार आम दीटा शंख सांसद प्रार्थी विधायक प्रार्थी विपुल संख्यार मोर जययुक्त करने सहित नवीन पट्टनायक हाथ मुठा टाण करवा आमर चिन्ह नवीन पट्टनायक VK पांडियन जी अरे बिजू जनता दल अरे जीतिला धन्यवाद समस्त को जिंदाबाद जय जगन्नाथ ये पवित्र माटी रे सब प्रमुख क्षेत्र कहया गले भुवनेश्वर आम लक्ष्मी सागर झारपड़ा रे अच्छे और मोर सबुठु प्रमुख व्यक्ति आम भुवनेश्वर गुरुजन माने बसचंती तांको आगे मु गोटे पुओ हेई कौन भाषण देवी मु भाबुथिली किंतु समय नाई भाबिबाकू कहीं बहुत विलम्ब होईची बहुत देरी होईची कहीं श्री आम प्रिय श्री VK पांडियन तांकर एटा बोधे 8वां मीटिंग एटा 8 मीटिंग तो सी भी निजे बहुत व्यस्त किंतु बहुत सुंदर कथा कहते आगुरु 2टा मीटिंग रे एते बढ़िया तथ्य देले एते बढ़िया योजना विषय बुझेले आगु कौन लक्ष्य अच्छी बुझेले जो लक्ष्य मु तांकटू प्रेरणा नहीं श्री नवीन पट्टनायक प्रेरणा जो नहीं जे 10 वर्ष रे 2034 रे आमे आम ओडिशा को गोटे विकसित राज्य रे कन्वर्ट करवा सेति तांकु सैनिक दरकार थिला सेति युवक दरकार थिला सेति युव शक्ति दरकार थिला मु सही प्रेरणा रे मु सही सैनिक होबा को आछि सही सैनिक श्री नवीन पट्टनायक सैनिक होबा को आछि समर्पित अछि लड़ाई पे प्रस्तुत अछि जेते आपण बाधा सृष्टि क्रिएट करंतु जेते आपण माने कष्ट दियंतु जेते केंद्र सरकार हैरान करू कि जेते मु तांको नाटा भूली जाउछि बीजेपी यदि बीजेपी भी यदि हैरान कले ओडिशा पछकू घुंचीब नाही आगुकू बढ़िब से रथ आगुकू माड़ी चली से रथ आउ पछकू घुंचा दब नाही श्री नवीन पट्टनायक अच्छंती आम गुरु आमको श्री VK पांडियन आमको गुरु आमको गाइड करछंती से गाइडेंस रे मो पीढ़ी मो आग पीढ़ी मो पछ पीढ़ी समस्ते प्रेरणा नहीं कि अपेक्षा रे अच्छंती जे 25 मे रे
आमे भुवनेश्वरवासी भुवनेश्वर क्षेत्र जो 2019 रे जो भूल करथिले गोटे एते बड़ भूल गोटे ऐतिहासिक भूल जो व्यक्ति बारंबार ओडिशा को बदनाम कला जो व्यक्ति बारंबार श्री नवीन पट्टनायक छवि खराब कला जो व्यक्ति बारंबार सबु योजना विरोध रे काम कला जो व्यक्ति आपण विरोध रे काम कला मो विरोध रे काम कला ए समस्त ओडिशावासी विरोध रे काम कला से भाया व्यक्ति को आउ थे से भूल केमती न हो चेष्टा प्रचेष्टा सबु प्रकार आमे करिकी ए लड़ाई रे आगु बढ़ुचे 3 दिन रहिला आज्ञा ए 3 दिन रे बहुत किसी चेष्टा करेंगे आपण को भांगिया को मते भांगिबा को बहुत किसी षड्यंत्र करिया चेष्टा करि परिबे किंतु गोटिए कथा मन रखि थांतो ये होची ओडिशार सम्मान श्री नवीन पट्टनायक का सम्मान शंख चिन्हर सम्मान बिजू जनता दल रे सम्मान ये मनमथ राउत रे नुह ये पूरा परिवार रे सम्मान मन रखि थांतु मु जदी एटी चिल्लाउची मु जदी आपण मान को एती कथा कहूची तो मन आपण भाभी पारथिबे जे मु केते प्रस्तुत अछि लड़ाई पे जे अल्पत लड़ाई हबो जेते जाके लड़ाई करकी सम्मान मु वापस आनी की देबी मनमथ राउत रे सम्मान फेरे की आनिबो आपण माने अछंती तो मनमथ राउत रे अछंती तो ए अंचल पुओ सेत्र अछंती तो ए पाइक पुओ सेत्र अछंती तो अधिकार पे लड़ाई करबा तो दिल्ली रे लड़ाई करबा तो जय जगन्नाथ जो जोश रे मु अछि मु आशा करछि पूरा परिवार मो सेत्रे अछंती ए लक्ष्मी सागर माटी रे मु जेबे भी बिजू जनता दल को भी प्रोग्राम को आछि एमती ही जनसमुद्र होइछंती ता माने परिवार आज जो भी सिचुएशन हो खराब हो वर्षा हो जहाँ भी हो बात्या आसु आपण माने श्री नवीन पट्टनायक को भल पाइछंती आजीवन भल पाइबे आगु को 25 मे रे दीटा शंकर रे आपण माने आशीर्वाद देबे मोर पूरा मु आपण को प्रतिज्ञा दउची एभली परफॉर्मेंस दबा एभली दाबी आमे दिल्ली रे करबा जो अभेला ओडिसा को करचंती आ जीवन में केबे करिवेनी सम्मान दबा को पड़िबो ओडिशावासी को सम्मान दबा को पड़िबो सेही भली परफॉर्मेंस दबार अछि सेही भली पुओ हबार अछि सेही भली ओडिशार पाइक पुओ हबार अछि जय जगन्नाथ कल सब रेडी तो लड़ाई पे रेडी तो कौन भाई माने रेडी तो मु रेडी मरी चलो अनेक अनेक धन्यवाद परे परे से व्यक्तित्व को मुहरु सुनिबा जहां को अपेक्षा करिचे कार्तिक पांडियन सर को पाई गोटे शुभ हुड़ाहुड़ी है जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ लक्ष्मी सागर र प्रिय भाई और बणी माने बंधुगण माँ माने समस्त को मोर नमस्कार आज एटा बोधे मोर 9 नंबर प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम मु देरी रे आसिली मते क्षमा करंतु प्रति आरंभ होता किओंझर चंपुआरु तापरे चंपुआ परे ताकुरमुंडा मयूरभंज जिले रे तापरे पटना तापरे एमती आसी आसी आसिक ये आपण मान पाखे पहुँचवाके टी विलंब हो गला सबु जगार लोकंर भल पाइबा स्नेह टी टाइम स्पेंड करी देरी हो गली मत क्षमा करंतु आपण माने एई टाइम रे एते संख्या रे आछंती आपण माने आम प्रिय मुख्यमंत्री के भल पाउंती केते भल पाउंती तांकर काम पसंद लगुची तांको जरिया रे नुआ ओडिशा गठन हबो से आपण मानक मुहरे खुशी हस फुटाइबे आपण माने तांका आशीर्वाद करिबे 25 तारीख रे आशीर्वाद करिबे आनंद बाबू एवं मनमथ बाबू का आशीर्वाद करिबे आपण मानकर आशीर्वाद रे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे आम प्रिय मुख्यमंत्री पुणी मुख्यमंत्री बाबरे शपथ ग्रहण करिबे कौ तारीख रे कौ तारीख आपण मानकर आशीर्वाद रे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे 9 तारीख रे आम प्रिय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करिबे कला परे प्रथम दस्खत हबो बिजली बिल को छाड़ करिवे ओडिशा रे तिबा 90% परिवार बिजली बिल छाड़ रे उपकार हबे द्वितीय दस्खत हबो आपण मानक भितर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड
कहा कहा पकड़े नाही हाथ उठातु कहा कहा पकड़े नाही BSKY कार्ड आपण मानक दरकार की दरकार आम प्रिय मुख्यमंत्री 2 नंबर दस्खत हबो आपण मानकर स्वास्थ्य सुरक्षा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नवीन कार्ड पाइबे 3rd दस्खत हबो मिशन शक्ति मां माने किए होचंती टिके हाथ उठैले बहुत संख्या रे होचंती आपण मानकर बहुत दिन रा दाबी तिला मान्यवर मुख्यमंत्री पाखरे आपण आसिकी कहितले सार आमे 60 वर्ष परे कोन एते बुली पारिबु एते काम करि पारिबु आमके टिके बत्ता देले बल हबो आपण माने अनुरोध करतिले आम प्रिय मुख्यमंत्री आपण का अनुरोध के रखिले 3rd दस्खत हबो मिशन शक्ति मां माने बत्ता पाइबे पेंशन पाइबे आपण पछरे सब बेले आम प्रिय मुख्यमंत्री टिया होती 5 वर्ष को तोरे आपण मानक सुजोग मिलुची आम प्रिय मुख्यमंत्री पछरे टिया होइकी तांके सशक्त करिबाक एई तरह से मुहूर्त आसुची कौ तारीख रे कौ तारीख बहुत संख्या रे आसी के आशीर्वाद करिबे आपण माने आशीर्वाद करंतु ए भितर किए किए मिडिल क्लास होचंती हाथ उठैले निजक मिडिल क्लास बोली की बाबुचंती से माने हाथ उठांतु ठीक अछि भारत वर्ष रे कौन सी राजनीतिक दल मिडिल क्लास में चिंता करंतु नहीं किंतु आम प्रिय मुख्यमंत्री मिडिल क्लास जोरिया रे नुवा ओडिशा गठन करिवा पे चाहुचंती आपण मानक सशक्त करिवा पे चाहुचंती मैनिफेस्टो रे मिडिल क्लास लगी 4-5 टा बल जिनस रखुचंती सेत्र प्रथम होची विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना गरीब लोग समस्त पाइले एबे आपण माने भी पाइबे स्वास्थ्य सुरक्षा पाइबे हठात कहार हार्ट अटैक गला मिडिल क्लास लोग भी गरीब हे जिबे जदी जनक हार्ट अटैक गले 5 लाख 7 लाख दरकार पड़िबो बड़ा हॉस्पिटल के नेबे लोन नबाक पड़िबो किबा किछि बिकिबाक पड़िबो आपणक एई असुविधा को दूर करिबा लगी स्वास्थ्य सुरक्षा लगी आम प्रिय मुख्यमंत्री विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड देबे एटा सारा दुनिया रे प्रथम थर किए मिडिल क्लास पे किछि करचंती नंबर 2 मिडिल क्लास रे और कोन दरकार होची स्वास्थ्य सेकेंड शिक्षा एजुकेशन एजुकेशन आपनकर पिला छुआ कोटी बड़ा कॉलेज रे एडमिशन पाइले तांके टिके फीस दबाक पड़िबो 5 लाख दरकार 3 लाख दरकार 10 लाख दरकार अपना एजुकेशन लोन नेबे से एजुकेशन लोन रा जो भी इंटरेस्ट आसीबो सेटा का आम प्रिय मुख्यमंत्री सबवेंशन करिबे इंटरेस्ट आके कमाइबे जदि बैंक 10% रे दउची 12% रे दउची सेटा के कमाइबे आपनक मुंड ऊपर तिबा बोझ हल्का हबो 3rd मिडिल क्लास रा और गोटे बहुत बड़ा समस्या होची घर किनिबा लगी प्राय मिडिल क्लास रा समस्त लोन नेबे हाउसिंग लोन रा सबुटु बड़ा समस्या कौन होची ए इंटरेस्ट केते बड़ी की चलिबो आपण इंटरेस्ट बांधी की बांगी पड़िबे एइतरु आपण को सुरक्षा दबा लगी जेमिति एजुकेशन लोन रा इंटरेस्ट का आम प्रिय मुख्यमंत्री कम करिबे सेवली हाउसिंग लोन रा मध्य इंटरेस्ट कम करिबे 20 लाख टंका पर्यंत आपणकर हाउसिंग लोन रे इंटरेस्ट सबवेंशन रबे और गोटे आपणकर पिला छुआ भी एटी तिबा गवर्नमेंट एडमिशन जोरिया रे +3 कॉलेज रे जिबे पोस्ट ग्रेजुएशन करिबे ए सब करिबे सेही समय रे आपणकर पिला छुआ भी स्कॉलरशिप पाइबे नुवा वो स्कॉलरशिप पाइबे जी पुओ पिला माने पाइबे 12,000 टंका मतलब प्रति मास 1,000 टंका स्कॉलरशिप पाइबे प्रति पिला जियो पिला माने पाइबे प्रति वर्ष 14,000 टंका मिडिल क्लास मुंड ऊपर जो भी बोझ अच्छी सेटा के हल्का करिबा लगी आम प्रिय मुख्यमंत्री ये सब पदक्षेप नौचंती आपण मानक मुहर भी टिके हस फुटाई आपण मानक सशक्त करिकी आपण माने और टिके बल रहिले बल ओडिशा उन्नति हबो आगे के बढ़िबो आपणकर पिला छुआ का आपण बल भाबरे पाठ पढ़ी पारिबे आपण निज घर किनी पारिबे आपणकर स्वास्थ्य सुरक्षा हबो हबो ना
एटा नवीन सरकार सेपट को अपने देखिबे बीजेपी सरकार 2014 रे कोइले आमे जदि क्षमता का आसीबू दरदाम कम करिबू दरदाम कमिला की डाली दर कमिला की पेट्रोल दर कमिला की तेल दर कमिला की मां मनकर गैस सिलिंडर दर कमिला की एबे आपण मानकर टाइम किए लोकंक पे काम करुचंती किए क्षमता पे काम करुचंती ए दुईटा के आपण अलग करबा पड़िबो सेवा मनोभाव नहीं की काम करिबा बिजु जनता दल के आपण माने आशीर्वाद करंतु अनंत बाबू एवं मनमत बाबू का आशीर्वाद करंतु गत थर जो भी आम प्रिय मुख्यमंत्री कम आशीर्वाद पाइछंती सेटा का आपण माने एतर ठीक करिबे आपण माने कहा कि एमपी करतिले से एमपी 5 वर्ष रे गोटे राजधानी भुवनेश्वर होची गोटे राज्यर राजधानी ये राज्य बहुत आगे के बढ़िबार होची जदि आगे राज्य आगे के बढ़िबार होची प्रथम प्रभावटा पड़िबा कोता राजधानी रे आम प्रिय मुख्यमंत्री तांका हाथ रे जो भी होची सेटा के करुचंती किंतु ये संसद का कर्तव्य कौन थिला भारत सरकार पाखरु बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आनिबार थिला आईटी पार्क आनिबार थिला सॉफ्टवेयर पार्क आनिबार थिला एमएसएमई पार्क आनिबार थिला टेक्सटाइल पार्क आनिबार थिला आपणकर पिला छुआ को रोजगार दबा पे लगिबार थिला ये सब कले की जने राजधानी रे संसद आपण देखिबे बेंगलुरु रे जने सांसद होचंती बीजेपी रे भोपाल रे जने सांसद होचंती बीजेपी रे सांसद जयपुर राजस्थान रे राजधानी रे जने सांसद होचंती बीजेपी रे सांसद यमने समस्त जदि लगी पड़ी की तांकर राजधानी लगी 30,000 कोटी 50,000 कोटी 40,000 कोटी आनी पारचंती ए मैडम कौन करचंती गोटे प्रकल्प कोई पारिबे ए मु ए बड़ा प्रकल्प आनिली 4.5 वर्ष परे मन पड़िला आहा 4.5 वर्ष गला मु भुवनेश्वर को किछि काली नहीं एबे मु सीएसआर फंड आनिबी आनिकी मंदिर रे जाइकी वाटर कूलर बसैबी बसिकी वोट मांगीबी एटा जने सांसद करिवा काम जने आईएएस ऑफिसर तिले भुवनेश्वर कुर्दार कलेक्टर तिले भुवनेश्वर कमिश्नर तिले आमर भी आशा तिला मु भी एटी जने वोटर जने आईएएस ऑफिसर एमपी होइचंती लक्ष्य कोटी टंका आनिबे भुवनेश्वर को पूरा रूपांतरीकरण करिबे ए मोर भी आशा तिला मुख्यमंत्री कर भी आशा तिला मु आपण खुला कथा कहबी जदि से भल काम करतिले भुवनेश्वर लगी आम प्रिय मुख्यमंत्री तांका विरोध रे प्रार्थी भी देबे नहीं एटा होची नवीन बाबूंकर स्टाइल नवीन बाबू राजनीतिक उद्देश्य रे काम करिबे नहीं सेवा उद्देश्य रे करिबे जदि से भल काम करतिले आज तांका विरोध रे प्रार्थी भी देबे नहीं बिजु जनता दल रा मुख्य एटा होची नवीन बाबूंकर कमिटमेंट ए भुवनेश्वर लगी दुखर कथा किछि कले नहीं किछि करिबा को भी देले नहीं किछि कले नहीं किछि करिबा को भी देले नहीं आपण बाबंतु ना गोटे शहर केमिति बड़ा हबो केमिति शहर रा डेवलपमेंट हबो रिंग रोड दरकार आपण जदि भुवनेश्वर रु 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर गोटे रिंग रोड करिबे कैपिटल रिंग रोड ताहले भुवनेश्वर कोटी सारुची सेइट्रु से रिंग रोड पर्यंत बड़ी बड़ी की चलिबो आपणकर जमी रेटटा कमिबो आपण माने घर किनी पारिबे प्लॉट किनी पारिबे भुवनेश्वर बढ़िबो 5 वर्ष रे भुवनेश्वर को 25 वर्ष पछक नहीं गले आपणकर मान्यवर सांसद दुखर कथा आपण माने आम मनमत बाबू का आशीर्वाद करंतु से जाइकी आपण मानक पे लड़ीबे सांसद रे लड़ीबे एबेकार सांसद रे जाइकी स्वर उठैछंती भुवनेश्वर लगी आपण माने जानछंती तोरे भी स्वर उठनांती तांकर किछि काम करिबा के भी इच्छा नहीं काम बंद करिबा पे इच्छा तला पूरी काम रु आरंभ करकी लिंगराज काम पर्यंत सब काम रे मुंड केलिले केमिति नवीन बाबू बोला ना कमेबे नहीं बिजु जनता दल बोला ना कमेबे नहीं लोक मानकर कथाटा छाड़ी दियंतु पूरी मंदिर जदि काम हेई जिवो
400 वर्ष जो भी काम है नहीं तिला सेटा हम मुख्यमंत्री करिबा पे चेष्टा करतिले ना कमेबे बोली कि ईर्षा लगी पड़िले बंद करिबा पे लिंगराज काम लगी पड़िले बंद करिबा पे 2 वर्ष अटकी रखिले तांकर क्षमता रे जो भी तुला आपण माने ओचंती क्षमता दबा लोग बाबी की दियंतु किए आपणक काम करिबे आंतरिकता सह काम करिबे सेवा मनोभाव नहीं काम करिबे राजनीति करिबे नहीं डेवलपमेंट काम रे किए भी राजनीति करचंती तांक छाड़ीबा कथा नहीं आपण माने उत्तर देबे बहुत संख्या राशि की उत्तर देबे मेट्रो रेल प्रकल्प केंद्र सरकार करिबार तिला ये जदि सांसद चाहतिले जाय की लगी पड़ी की मिनिस्ट्री की मीट करी 5 वर्ष हमारा टाइम अच्छी मु 2 वर्ष रे मेट्रो को सैंक्शन करके आनी भी 3 वर्ष मेट्रो चले भी एटा तिला जदि जने बल्ला सांसद काम किपची कले नहीं राजनीति कले एबे कूलर बांटुचंती मंदिर मंदिर रे बुली की कूलर बांटुचंती वोट पे आपण माने आशीर्वाद करंतु अनंत बाबू एवं मनमत बाबू के ए 2 जन बंधु मान्यवर मुख्यमंत्री आशीर्वाद रे आपण मानक लगी भल काम करिबे पुणी एटी आसीबा आपण मानक मीट करिबा मंच करिबा आपण मानकर समस्या के समाधान करिबा जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकर स्नेह भल पाइबा मु आपण मानक पाखरे सबु बेले ऋणी आमे भल काम करिबा आपणकर भविष्य पीढ़ी लगी भुवनेश्वर रो उज्जवल भविष्य लगी ओडिशा रा भविष्य लगी नमस्कार समस्त एक स्वर रे कहिबा 2024 बीजेडी वंस मोर 2024 बीजेडी आम सरकार लक्ष्मी सागर मेलन पड़ियारू आपण सीधा चित्र देखि पारुछंती कार्तिक पांड्यान को प्रचार चली एवं तांको मुहरु संबोधन सुनिबा पई बहु मात्रा रे लोकंकर समागम होइछि मध्य भुवनेश्वर पई प्रचार करिसंती कार्तिक पांड्यान जदि रूमटा स्टील रे बनै थांता त रईस से पट दे आसी पारि न थांता रूमटा स्टील रो एही चमत्कार थरे लागिले चाले वर्ष वर्ष रूमटा स्टील केएमटी बार एकदम सॉलिड क्या खुशबू है यार कल से वेज नॉन वेज इसी में बनाओ भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया Admission opens for plus 2 science in Ganesh Higher Secondary School at Bhubaneswar and Chandikhol. Smart classroom, doubt clearing classes and hostels for both boys and girls. आपण समस्तन प्रिय अरुंधति ज्वेलर्स एबे खूब शीघ्र सिल्वर सिटी कटक रे ओडिसा रे हमर चली सफल इलायची सबु गली सबु छक्कारे सफल महकी जाए रे ओडिया सिनेमा गीत रे सफल रसद शुभे रे प्रतिटी ओडिया सफल र कथा कहे रे सबु समय ओडिसा रो स्वाद चाखे सफल रो आपण समस्तन प्रिय अरुंधति ज्वेलर्स एबे खूब शीघ्र सिल्वर सिटी कटक रे Admission opens for plus 2 science, plus 3 science, MBA, MCA, ITI and Diploma Engineering in Ganesh Group of Institutions, Bhubaneswar and Chandikhol. सकाळु खोलिले आखि प्रगति प्रगति आपणार अति ओठ चाहे मन चाहे जासुआद नीति खीर दही लसी घी घरे घरे अति प्रिय गोलाप जामुन रसगोला पनीर रसीला संज बेले सांग मेले जमी जाए खटी प्रगति 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 Admission opens for Diploma Engineering in Ganesh Institute of Engineering and Technology at Bhubaneswar. 100% placement with industrial visit, well-equipped laboratories and ultra-modern library. आपण समस्तन प्रिय अरुंधति ज्वेलर्स एबे खूब शीघ्र सिल्वर सिटी कटक रे Dreams University, where possibilities are limitless. Headlines brought to you by
scholars Gurukul. भुवनेश्वर रे कार्तिक पांड्यान को माराथन प्रचार मध्य भुवनेश्वर नयापल्ली यूनिट 9 और लक्ष्मी सागर रे कैंपेन मध्यवित्त राज्य और देशर विकास इंजिन राजधानी विकास नहीं केंद्र को अटाक दरदाम ह्रास प्रतिश्रुति पालन कलानी बीजेपी एबे मिछ कथा कही वोट हातेबा उद्यम जनता देवे जवाब जनजाति किछि करिनी केंद्र अधिक करिसेंती मुख्यमंत्री केन्दुझर माटीरू केंद्र को पांड्यान को अटाक कहिले एसडीसी रु लाभ भली आदिवासी माळमाळ योजना घसीपुरा रे केंद्रमंत्री को टार्गेट श्रीमंदिर और लिंगराज प्रकल्प रे आनिथिले बाधा नहेले 3 वर्ष आगरू सरिथांता काम मुख्यमंत्री को आशीर्वाद लागि आह्वान अहंकार देखाई अड़ुआरे संबित पात्र बीजेपी पुरी लोकसभा प्रार्थी उपरे बर्षिले पांड्यान कहिले जगन्नाथ ओडिया अस्मितार प्रतीक हेले तांकु नै राजनीति करुछि बीजेपी क्षमा प्रार्थना दाबी कले बीजेडी और कांग्रेस सेपटे संबित पात्रों को विभिन्न स्थान रे विरोध भोट रे जवाब देबे कहिले पुरीवासी सबुठी शंखनाद प्रथम परी द्वितीय पर्यायर भी हेब क्लीन स्वीप 5 लोकसभा और 35 विधानसभा हेब बृहत विजय शासक दलर आगुआ अंक कषा नवीन को विकासमूलक काम को भोट रे मोहर दुई जातीय दलर केंद्रीय नेता काम करुनी प्रतिश्रुति कांग्रेस कहिला बहु स्थान रे लड़ई रे नाही बीजेपी नवीन ग्यारंटी नंबर 20 ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर विकास और संरक्षण को बीजेडी इस्तेहार रे गुरुत्व आसंता 10 वर्ष रे भाषा पाई 100 कोटी ऐतिह्य संस्कृति पाई 1000 कोटी ओडिया विश्वविद्यालय एवं श्रेष्ठ भाषा विश्वविद्यालय पश्चिम ओडिशा भाषा पाई उत्कर्ष केंद्र विस्तृत तथ्य देला बिजु जनता दल मनमत को पाई नवीन को अपील भुवनेश्वर बीजेडी लोकसभा प्रार्थी को पाई भोट मागिले मुख्यमंत्री लोकों को सेवा पाई आसीछंती जोड़ी शंखरे भोट देबा को अपील भुवनेश्वर एकाम्र रे अशोक खोर्धारे राजेंद्र को जोरदार कैंपेनिंग भुवनेश्वर उत्तर रे सुशांत राउत को रोड शो कांग्रेस और बीजेपी रो बीज मुछि प्रचार खोर्धा को अशांत करने को प्रशांत उद्यम प्रेसमिट रे चेतावनी 24 राति रे पुलिस स्टेशन एसडीपीओ जिलापाल ऑफिस रे करिवे हमला 25 रे निर्वाचन कराई न देबा को धमक सेपटे टिटलागढ़ रे बीजेपी प्रार्थी नवीन जैन भोटर को देइछंती धमक नीति नैतिकता नहीं प्रश्न कला बीजेडी एक्शन लगी सीओ को फेरा काली लघुचाप क्षेत्र 48 घंटे नेब अवपातर रूप 2 दिन प्रबल वर्षा संभावना तथापि बात्या चित्र अस्पष्ट बहीपारे 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत पवन सेपटे आज भूपृष्ठर उभे गला छाई ट्विन सिटी रे स्कूल कॉलेज पिला नेले शून्य छाया दिवस अभिज्ञता ज्योतिविज्ञानी सूचना वर्षरे पड़े एपरी 2 दिन नमस्कार नंदीघोष नेशनल आर्ट 9 को आपन को स्वागत करुछि मु शुभश्री महापात्र आसंतु देखिबा कार्तिक पांड्यान को सहित स्वतंत्र साक्षात्कार Mr. Pandian, thank you so much for joining with us and speaking to us today. Thank you for coming to Odisha. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Phase 5 ended it was crucial for the state. Can you tell me what is your takeaway after the phase 5 of polling? Phase 5 is yesterday's poll. Yeah, yesterday's. The polling has gone off well. Perhaps in some constituencies there is less polling, but some constituencies it is more polling. And BJD is sweeping. Sweeping the polls? Yes. Okay. So the Prime Minister was here. He's been campaigning a lot in your state. What is your takeaway from that campaign that he has launched? It's a very strident language that he has used, unlike in the past. So what do you have to say? I think it's part of the electoral process. They have their own strategies to do. So we take it like that only.
So there's a lot of back and forth which is happening between the BJD and the BJP over the Prime Minister's campaigning, over the state chief ministers who have come here. It doesn't, you don't get offended, agitated, upset with all the comments? I think the people of Odisha will get upset if a very popular chief minister is hit very badly by using foul language or bad language. The people of Odisha will get offended and they may show it on the elections. That's how I see it. And I think the Honorable Chief Minister also gave a bite saying that Assam Chief Minister coming to Odisha and saying that he will make Odisha #1, then what will you do with Assam? Yeah, but then chief ministers have been going to other states to That's campaign. okay. That's okay. But just that the point that he said that we will make Odisha #1 means what he will do with Assam. Or many of the central leaders who are going to every state and saying that they will make #1 the particular state. So that doesn't cut ties with the people. These are all, maybe they are trying to do a political narrative, but it won't cut ties. You know, when polling started in the country, in the first 2 phases, it was kind of slow, low polling, and everybody said it's very thanda in the rest of the country. But Odisha started polling in the middle of the elections. Right. And here it is very different, like in Andhra, state polls as well as central polls. So do you feel that it was a slow start in the first 2 phases in Odisha, or did it just take off? I think whatever was expected in a simultaneous poll, like for example, the entire country has gone for a general election, not a simultaneous poll. Whereas Andhra, Odisha, when state polls are involved, the polling percentage is generally maintained. That's how I see it. So there is an enthusiasm for... Absolutely, absolutely. Even in spite of heat and humid conditions, people have come out in large numbers and almost the polling percentage has been maintained. How have you come to the conclusion that you're sweeping in the first 2 phases of polling? We have our ear to the ground. We do a lot of scientific surveys and we base our faith on Honorable Chief Minister's popularity, the reach of the schemes and the feedback we get from people. And when you go on a campaign, you see the smiles in the people faces. So that says it all. Is that generally the demeanor of Odiyas, that they smile anyway? Even no, there are 15% people who don't smile when you go to a place. So when 70-80% people smile, you know that there is a connect. When 40%, 30% people don't smile or don't give a response, then you know that there is something missing. Okay. A controversy happened yesterday with Sambit Patra, the BJP candidate from Puri. For those who don't know about it, haven't read the social media in their feed. So he compared that Lord Jagannath, Mahaprabhu Jagannath is a bhakt of Mr. Modi. Now, after that, he did say that he was giving several interviews and in the heat and the noise and the dust, by mistake, it was a slip of the tongue, and he said, instead of saying that Mr. Modi is a bhakta of Mahaprabhu Jagannath, he said it vice versa, and it was a mistake. But the chief minister reacted and he said that I think whatever the time lag was there, many people had given their comments in social media that it has hurt the sentiments of people of Odisha, and BJP is talking about Odia Asmita. So he is the symbol of Odia Asmita, Lord Jagannath. And the chief minister has always felt that we should keep our gods outside politics. They are immortal and we are mortal. Why we should mix both? We should always keep religion and gods out of the purview of electoral discourse or political discourse. He has never used it. So he felt hurt when this statement happened. So it's very unlike Naveen Babu to tweet something like this, isn't it? Because they have been harping on Odia Asmita, and they have been, and he is genuinely upset that Lord Jagannath has been dragged into politics so much in this election, which is not fair. People of Odisha don't like dragging religion or Lord Mahaprabhu Jagannath into politics. You say that we have done this work, we have reduced price rise, we have done great infrastructure, we have provided jobs, and go for vote. Why do you have to drag the Lord for elections? That shows that you are a little desperate. And it is not the first time it has happened. Throughout this, in fact, even in 2019 they tried to do that. In Panchayat elections they tried to do that. Always they link something or other with religion, Lord Jagannath, Sri Mandir.
I would say that the kind of work the Chief Minister has put in Sri Mandir, the parikrama which has been created, it has touched the heart of people of Odisha. So BJP is trying to electorally hit BJD and Naveen Babu by finding out something or other which are non-existent issues in Puri. It's a political strategy they are trying to do. I will come to the Odia Asmita later in the conversation. But to come back to the controversy, Sambit Patra has said that he will do an upvas, he will do penance. Is the story over, or is the BJD? I think he should take care. It's too much of heat and dust. He should eat properly and take care. From heart somebody prays, that's done. Because 3 days before his election, he should not faint or something. He should take care of himself. Of course, he's a doctor. He should be knowing what to do. So will the BJD escalate this further, or is the story over? See, Lord Jagannath can never be escalated, and Lord Jagannath should always be above everything else. BJD never believes in doing politics over religion, especially Lord Jagannath, who is the symbol of Odisha identity. See, off the record, some BJP people have said that it's not something new which has happened. In the past, there are people who are big fans of Biju Patnaik as well as Naveen Patnaik, who have said that both father and son are as good as gods for Odiyas. I have not heard of this. People out of love saying something out of emotion is different, but I have not heard anything of people comparing Naveen Babu or Biju Babu to any gods. They will first condemn it. In case they get to know, they will be very shocked and they will say that it's not done. You know, you spoke about the Jagannath temple and the parikrama around it. Now, the Prime Minister said, he spoke about the Jagannath Mandir, and he said that for the past 6 years, the keys of the Jagannath temple's Ratna Bhandar has been missing. And he said that leaders of the BJD are involved in this conspiracy about the keys missing. Can you explain to our viewers what is this controversy? Those who are not Odiyas may not know about this. So can you tell us about this? Ratna Bhandar is the treasury of Lord Jagannath. It has not been opened till from 80s onwards. More than 40 years, nobody has opened it, because there has to be an occasion to open. And the Ratna Bhandar and temple affairs are managed by a committee which is headed by Gajapati Maharaj, Puri Gajapati Maharaj. He is not a political person, or he is not an official. They have the hereditary rights, and they manage the affairs of Sri Mandir. It is headed by Gajapati Maharaj. So 40 years, if something has not been opened, and it has and everyone in Odisha will be knowing when the Ratna Bhandar is going to open. There will be a series of rituals to be done and practices to be done, how it will be open, what all key, so many processes are there. It cannot be done without anyone's knowledge. So in these 40 years, 10 years was two BJP ministers who held that portfolio. Mr. Vishwabhushan Harichandan, who is presently the Honorable Governor of Chhattisgarh, and Mr. Manmohan Samal, who happens to be the state president of BJP. They both have held. If there was anything amiss, they could have raised it at that time. It is 40 years, 1980s. Nobody has opened it. And Honorable Chief Minister took over as CM only in 2000. From 2000 to 2010, these ministers were there who were holding the fort for law department. But it's not a question of it not being opened. The keys are missing is what the Prime Minister said. That is also under enquiry by the High Court, which the committee has decided to open the Ratna Bhandar on during the Rath Yatra time. During Rath Yatra time, it will be opened. So everything will come to, everything will be known to people when that enquiry is completed. Whether, if at all there was something missing, it will also come to the fore. So right now nobody knows what has happened, because 40 years, 1980s. Okay. So this is an issue which is being sensationalized always during elections. Even in 2019 it was done. Every by-election it has been done, and Panchayat elections it was raised. And in Panchayat election, BJP lost all the districts. BJD won 30 out of 30 districts. If they think that these things can give electoral success, this is what the history has been. And in this Ratna Bhandar issue, the government has been extremely transparent, and it is under the purview of the High Court.
the High Court ordered the government to form a committee. Justice of Supreme Court has been appointed along with eminent members to open the Ratna Bhandar. Everyone is invited when it is open, and you will get to know after 40 or 44 years it will be opened, and what is there, what is not there, it will be known and it will be compared with the register. So absolutely there is no cause of worry that something will be missing from Ratna Bhandar. Who's maintaining the register? Register will be maintained by the temple administration, which is headed by Gajapati Maharaj. All right. The Prime Minister in Cuttack said that the keys probably have been sent to Tamil Nadu. The dig was totally at you. He has made a political statement. So how do I respond to it? You will have to, because now you're in politics, right? How can you not respond? I mean, you're no longer just an IAS officer who will be silent. So at a personal level, it makes you feel saddened that Lord Jagannath and my connect with Lord Jagannath is being questioned for a political purpose, which is very sad personally. On a as a factual statement, I would like to say that completely baseless, and it is very unfortunate. We spoke about we spoke about Odia Asmita, and the Prime Minister said that, and the BJP also says that... I should give a spiritual answer as well. Perhaps it is karmic to go through all this. I leave it to Lord Jagannath to decide. Really? Absolutely. I surrender. Jagannath culture is surrender. You see, most temples you pray like this. In Jagannath, you go and raise your hands. It is complete surrender. If the Honorable Prime Minister has told like this, then I surrender to Lord Jagannath. Is that how you deal with all the criticism that comes your way? Absolutely, absolutely. They say that what is Jagannath culture? Jagannath culture ka one of the important aspects is complete surrender. When you surrender, then you don't have much stress. Right. But this statement hurt me. I am also a human being. It hurt me. Yeah. I can well understand that personal attacks is something that you're not used to because you're new to politics, right? No. Personal attacks at all other levels are okay. But linking it with Lord, whom you completely surrender, whom you are in love with, whom you think that you have janam ka connection with, so then you feel sad, then you feel hurt. So that also you take it out by going to the Lord that the Honorable Prime Minister has spoken like this. So I leave it to you, Lord. You take it of me. That's it. Mr. Pandian, But he made a political statement. He would not have meant what he said. That's how I see it. You're not a Bhumi Putra in the sense that you are from Tamil Nadu. What is your connect with Lord Jagannath, who is from Odisha? I understand this is your Karma Bhumi. But what is your connect with Lord Jagannath? I think it will be too personal to tell. I never knew that I'm going to work here. I never knew that I'll be married to somebody from here. And when I was in, to be honest, when I was in college or sometime, this is something which I have not told anyone. A name came to my mind, must be 95, 96 when I was in my bachelor's degree. That this name, if at all I'll have a son, I'll name him this name. I didn't know the meaning of that name. It just came to me. And I am very poor in Hindi or Sanskrit. Now at least I know a little bit, but that time I didn't know. So I had told Sujata that in case there is a son, I have a name for him. She was also very scared that if I will come with some deep names. So after he was born, she asked me to write in a slip of paper and give. So I wrote in a slip of paper and gave. The name was Sri Mukha. It is Lord's face. It is Lord Jagannath's name. I didn't know head or tail about this name till I told her. Or still she responded, or her parents said that this is Lord's name. So that is how I have a deep link with Lord, and he has guided me always. That is the complete surrender. This is something which it's unbelievable, but it's a fact. My son is called Sri Mukha. Right. And do you feel that that is the reason you have some kind of a Guru-Shishya relationship, which you said with Naveen Babu? It is ordained by God? Is that how you see it? See, I strongly believe that whatever happens is his will and his wish. It started as a very professional relationship with the Honorable Chief Minister. Both of us are linked by the work we do for the state and the love for the people. But
Is that something which is acceptable to the people? Because in politics, acceptability is different. In administration, acceptability is different. I'm sure a chief minister has people from different places in the country come and work as IAS officers. I couldn't understand. So when it comes to you interacting with the people, now that you've entered politics, will they accept you as Naveen Babu's protege? So June 4th will tell what the people think about my campaign and how I have helped the chief minister. Are you chief minister in waiting? Not at all. I am just helping Naveen Babu as a foot soldier. He's not grooming you to be chief minister? Not at all. Biju Babu never groomed Naveen Babu, and Naveen Babu will never groom anyone to follow his footsteps. He is a Democrat at heart, and he knows the party, and the people of Odisha will decide whatever is good for the party and the people of Odisha. But when Biju Babu passed away, people thought that Naveen Babu will never be able to reach to that level because the shadow of Biju Babu was so large. And they said Naveen Babu he's a Delhi boy, he doesn't know how to speak Odia, he's too sophisticated, whereas Biju Babu was a son of the soil, he will not measure up. And today, Naveen Babu has more than measured up, one of the longest serving chief ministers of the country. And electorally more successful than any other leader in the country. So that can be said about you too, right? No. That you also cannot be seen as somebody who's not connected. I wouldn't like to comment on it. As I said that right now in the middle of elections, I am completely committed for the chief minister. One doesn't think about future so much. As I said that Jagannath culture, you surrender and go with the flow. Is the party accepting of you? Because there are murmurs in this state that, there's a high-handedness, pardon me for asking this, that there's a high-handedness because you have the complete trust and faith of the chief minister and you are roughshod on many of your colleagues. Is that true? I wouldn't accept this because as part of the 5T principle, one is teamwork. A person who is individualistic in his performance will not be able to perform so well like the team. If Odisha has performed well in sports, economy, transformation, health, any indicator you take, we have performed so well, including COVID management and disaster management. Disaster management cannot be done by one person, roughshoding over people. Yeah. COVID management cannot be done by one person, roughshoding with people. Dictators cannot survive. Dictators cannot flourish. Only a teamwork can help. And the Honorable Chief Minister believes in teamwork. So are all of us. So I want to. So these are all baseless allegations. Like for example, whoever will not get ticket in BJD, they will raise these allegations. Whoever is not happy with the kind of integrity clause we have for bureaucrats, they will be upset. What is the integrity clause? Impeccable integrity. When the Chief Minister has removed the maximum number of government servants from job anywhere in the country, he has dismissed the maximum number of government servants for corruption charges. So they will be upset definitely. But there are people who go to Singapore and Europe on trips because they have done very well. From a lowest ranking junior engineer to the highest ranking officer, the Chief Minister sends on exposure visits if they have done very well. So there is a carrot and stick. To learn business practices? Or absolutely. To get exposure on administration, governance, whatever best practices are there. Right. So we believe in teamwork, and without teamwork, Odisha would not have done well. So I will ask you about local issues which come up during elections. One is about farmer distress. Can you tell us how the situation is in the rural areas? Because a lot of people which the Prime Minister also talked about, is the palayan, that people who leave villages and go in search of jobs to other places in the country. Migration. So how do you handle that? So Government of India migration data shows that Odisha has reduced the migration to the maximum in the country. You compare it with any of the double engine states, whether it is UP, Bihar, in fact even any other state, the rate of reduction of migration has been the sharpest in Odisha, and we have almost stopped distress migration. And the unemployment rate, as per the Government of India data, is the lowest in Odisha. We are number one in unemployment rate. Sorry. No, even in unemployment figures, ours are the lowest in the country. Lowest in the country. This is Government of India data. So when your unemployment rate is so low and your migration is coming down, distress migration has stopped. Whatever allegations they are making are not on facts. In fact, if they say that the governance is so poor
and so bad and migration is happening, people should have anger against the Chief Minister and the government. It is not the case. Whether it is 2019 elections or the recently concluded Panchayat elections, which was held on symbol. If somebody is winning 95% of the seats, we have to trust the democracy and people's judgment. The MSP on paddy, can you tell me about that? The MSP on paddy is under the purview of Government of India. The central government fixes MSP. They form a committee. They fix the MSP, and they are supposed to give MSP. The Chief Minister has always been demanding that the MSP should be doubled to cushion our farmers from any kind of distress. That's the stand of Naveen Babu and the stand of BJD. In fact, all party meeting was convened and asked the Government of India to revise the rates. They didn't do it. It's the Government of India which is supposed to fix the rate for farmers. If they have not done it, whose mistake it is? And to soften the shock of whatever distress happening, Chief Minister introduced a scheme called Kalia. It's a direct cash transfer. This was done before Government of India took up this farmers direct cash transfer scheme, PM Kisan. Ours was one of the first 3 states to do direct cash transfer to farmers to give subsidy on inputs. And now the Chief Minister has also introduced Kalia scholarships to take care of the education expenses of the students of farmers. And their medical expenses are taken care. So whatever is within the purview of the state government, the Chief Minister is taking care. It is the responsibility of central government to fix the MSP and to increase it. In fact, the entire farmer agitation was to give a legislative backup to the MSP, which the central government did not agree. So if they had done it, perhaps the farmers of the country will not be in distress. So this 3,100 rupees, which the BJP is claiming to make it as MSP, MSP is under the central government. They could have done it when they are in power for last 10 years. Why they didn't do it, and 10 days before election they are crying about MSP. And in 2014 and 2019, BJP in their manifesto had claimed that they will double the MSP. Yeah. Another thing which is there in the BJP manifesto is this Subhadra Yojana. There seems to be a lot of curiosity about that. What do you have in comparison to that? We don't have anything like that. Okay. The Subhadra Yojana, if I may tell the figures, they have said that it will cover all the women of the state. This is their advertisement says all the women will get 50,000 rupees voucher. So Odisha has about 2.2 crore women. So 50,000 rupees voucher means it's 1.1 lakh crores. 1.1 lakh crores. For the entire country, it will be like 35 lakh crores if they have to implement. The country's budget is only 25-27 lakh crores, including the defense budget and everything put together. So it's a very hollow promise just to create sensation. Actually, the problem is that BJP believes in creating sensation either through the temple issue or these kind of unbelievable promises. Are you saying that the promise made to women of Odisha is by the BJP is as hollow as what Rahul Gandhi has made? Would you compare that? Absolutely. I compare. Both of them will take back the state by 25 years. And in fact, very sorry to say that many states where their governments are functioning now, they are taking back their states by 20 years, 25 years. How do you get investment? How do you subsidize capital investment? How do you be competitive in the world? You have to subsidize your industries. You have to create jobs. You have to get manufacturing investments. You have to get semiconductor investments. If you go on and on with these freebies, like for example, Karnataka, they are spending about 35,000 crores or 40,000 crores. Their per capita debt is increasing like crazy. Same with Madhya Pradesh. After 6 months, these states will not be able to pay salary for their own staff. That is the first charge on a budget. You have to pay salary to your own staff. Next comes developmental schemes, roads, buildings, infrastructure. If you don't have money to pay to your staff, what will you do? Madhya Pradesh will be bleeding, Chhattisgarh will be bleeding. You may take it on record after 6 months, 8 months, 1 year. Let's see how these states perform. Until unless some magic happens in India, which is very difficult, these states will not be able to survive with their finances, whatever finances they have. Odisha's per capita debt is 22,000 rupees per head.
When Chief Minister took over, it was one of the highest in the country. Now it's the lowest in the country, 22,000. Gujarat per capita debt is 55,000. Madhya Pradesh per capita debt is 60,000. Karnataka is about 81 lakh rupees. How do you manage this kind of a financial situation? When you at the same time, Naveen Babu has said free electricity if they come to power for rural areas. Yeah. How? So the free electricity... Isn't that a freebie too? I'll explain it. The free electricity is self-targeting. He has targeted people who consume less than 150 units. Less than 150 units is consumed by people who don't have refrigerator, who don't have air conditioner, who may not have television. These are the poorest of poor sections which need a social security umbrella. He has not done it for all. He has done it as a self-targeting mechanism. And this will not cost more than 1,500 to 2,000 crores. Our budget is 2.5 lakh crores. We are not promising something of 50,000 crores or 60,000 crores. This is 2,000 crores. And it takes care of 80 to 90% of the population's needs. In fact, it is one of the ways, CM is very particular about increasing the per capita income of people. You take our 3-4 major interventions. One is health security. Odisha has the highest coverage under health security. You don't have an insurance in Odisha because government gives an assurance. 90% of the population is assured for 5 lakh to 10 lakh rupees health. 90% of the population. This is not, they don't have Ayushman here. No, we don't have. Why? Because Ayushman Bharat would have covered only the BPL families. It will be 50 lakh families. We have covered about 1 crore families. Number 2, Ayushman Bharat is insurance related. CM didn't want insurance companies to play middleman between the poor people, or we have a large tribal population, and the hospitals. They will fleece the poor people. They won't get justice. That is our example, that is our experience with the earlier RSBY, you must be knowing, Rashtriya, whatever that scheme of Government of India, insurance based scheme. Third is, the Chief Minister is providing 5 lakh for a male and 10 lakh for female. Isn't that going to empty out your coffers too? No. It is, we know the finances, how much it costs. It costs 5,000 crores for us. All our social security schemes put together, all our social security schemes, whether it is electricity, pensions, health, education, everything put together is 25,000 crores for us. That's it. In this election, a number of political parties, especially the BJP, has realized that women voters are playing a very strong role. That happened in 2019 too, and in 2019 it was the Labhartis and the women voters, but this time especially, the BJP seems to be relying a lot on women voters. Do you have any programs which are specific to women? Of course. Our Mission Shakti is an empowering program. It's not based on freebies, and that's why women are solidly behind Naveen Babu. They have been made MSMEs, they are doing business, they are doing government business for 5,000 crores. No state has done it. So, women self-help group movement is a very strong in Odisha. About 7 million women are part of this movement, and that is what BJP is trying to dilute by giving freebies. Naveen Babu has never given any freebie for this women self-help movement. He has not done anything outside the social sector. He has not done freely giving voucher or freely giving money. He has done it on health, on education, and now on electricity. These are the 3 things he is touching. Isn't there a free voucher system where you can like for example go for coaching classes and you get reimbursed and things like that? No, that is a smart card which we are planning to introduce. We are planning to introduce. Okay. That is on education. It cannot be called as freebie. That we have not yet introduced. From August 15th, we will be introducing. Like how we have given a smart card for health. This card almost works like a debit card. So in education also, we are planning to introduce a debit card. And how do you recharge the card? You have to do good things. You have to go to classes on time. You have to study well. You have to participate in extracurricular activities. You have to volunteer yourself. All these which will make an all-round personality, improve your confidence, competence, compassion. All that if a student does, his card gets charged. And with that charge, he can go buy books at discount, use travel discount, pay fees in discount, can access career counseling. Like that, many things which will help them can be done. So it's like a earn while you learn scheme, which has not been done anywhere. Interesting. And you say that Naveen Babu gets a lot of respect and love from women when he goes out campaigning.
But he does Men seem... also, but women is little more. Okay. Even in your rallies, I have seen a number of women who come out, give you garlands and give you the shawl and things like that. Tell me that when Naveen Babu is campaigning all that much, he doesn't seem to have the energy. I'm not being ageist, but it is a fact that he is not able to take the rigors of campaigning. Age is catching up with him. During the election process, don't you feel that the people of Odisha feel that he doesn't have it in him for 5 more years to be the Chief Minister of the state? Last time, 5 years back, in 2019, his entire campaign was just one line. This time, at least, he is speaking 5 lines. Which is? Apana mane kushi to. Are you all happy with me? That's the only line. It swept the elections. This time, he is asking that whether this scheme is good, this scheme is good, whether I am good, whether my party is good. People say with thunderous applause, yes, you are good. Then will you bless me? That's his campaign. This time he is using 5 lines. Last time he was using only 1 line. So, and we'll get to know on June 4th how it has touched. I have been with him. His meetings are electrifying. The 5-minute or 3-minute he has that strongest connect. People see that commitment in him, selfless commitment for the state. He's fighting from 2 places. Kantabanji and Hinjli constituency in Ganjam. Both these places have migration as an issue. Why is he fighting from 2 constituencies? If he's so popular, what is the need for 2 constituencies? And 2, how are these 2 constituencies going to benefit from having Naveen Babu as a candidate? So Hinjli is the best block in the country, awarded by Government of India, continuously. In the country there will be like 10,000 blocks or something, but Hinjli comes number 1. It's not any other block in any other part of this country. So that's what he has done to Hinjli. 99% irrigation. 99% irrigation. He has improved the livelihood of people like anything, and that's why every time his margin is very high. As regards constituencies, perhaps he wanted that faster pace of development to happen in one more constituency. Last time also he selected one constituency, Bijaypur. In 3 years, we could increase the irrigation by 70,000 acres. Never before in India, any part, they would have done it. So that is the kind of pace with which he wants development to happen in Kantabanji. That's why he has selected. Right. It is known for migration. That is one of the reasons why he has selected. And which one will he give up? Oh, that we have to wait and see what he decides. But why 2 constituencies? He is not willing to contest in more constituencies, even though people of Odisha want him to contest from almost every constituency, because whenever he goes to a constituency, magic happens in that constituency. If something takes 30 years to do, he gets it done by 3 years, by his sheer presence. How hands-on is he in administration? 100% hands-on. But you know, one more thing is that he is now 24 years in this same job. He knows who does what. He knows what season what problem will come. He knows if that weather forecast is this, whether it is going to be a drought or a flood situation. He has that huge knowledge pool with him, which is his huge strength. It's academic, right? He doesn't travel all that much. No, he travels. This time also in the campaign, he has traveled to almost every parliamentary constituency. Every parliamentary constituency he has traveled. He will be one of the most travelled chief ministers. Okay. Inside the state. He does travel. Right. But he doesn't travel outside the state. Yeah, he doesn't travel because he is so glued to the state. He doesn't travel outside the state. Very rarely for investments he goes abroad. Maybe in his entire 24 years he has gone only thrice. He's only gone thrice abroad? Yeah, absolutely. Absolutely. Not more than that. 24 years, 2.5 decades he has gone only thrice. And this is when he barely was in the state before he became a politician. See, that is the dedication with which he works, and that is why people love him so much. This man is here for us, and he gives his heart and soul for the state. His blood and sweat is for the state. He has sacrificed his personal life, which was very vibrant before he joined politics. And he stayed here in the same place, this premises of Naveen Nivas. You know, 3 months ago when I interviewed you here in Naveen Nivas, you spoke about the relationship that Naveen Babu has with Mr. Modi.
that they were chief ministers, they used to attend the chief minister meetings, and that they had a warm relationship. What went wrong in that relationship, in the sense that the sharp attacks that one is seeing that is happening now? I don't think there is anything wrong with their relationship even now. I think they maintained that great friendship between each other. They are two great individuals and they maintain that friendship. This is political process, but at an individual level, the respect they have for each other is immense. But the Prime Minister said, will Naveen Babu be able to remember the districts and name So the he has districts? to say something for getting votes in Odisha, so he has to do that. But that doesn't mean that he doesn't respect the Chief Minister for his integrity, for his impeccable work, for what transformation he has done. He is in an electoral process, so the Honorable PM has to take some of these points and So tell. this is exactly the reason, Mr. Pandian, that everybody thinks that what is happening is shadow boxing. It's Noora Kushti which is happening between the BJP and BJD, between Naveen Babu and Mr. Modi, that they're doing this and actually they're like pals. See, I'll tell one thing, that the commitment with which they both work for a larger cause is something which binds them. That is what I would say. But it's not shadow boxing at all. The mention about Ratna Bhandar or mention about some things which are, it's not in good. It's not the way generally a political discourse happens. So, but still the relationship, the respect they both have for each other is the same. I don't think they are very mature individuals. Right. And seasoned people. They overcome electoral barbs as soon as elections Absolutely, are over. absolutely. Between the two of them. But then Naveen Babu is known to harbor grudges, would I say, or harbor things, especially when I come to the Jay Panda relationship. He was a protege, a friend, he was a family friend, but somewhere things went wrong, and so there is an element where Naveen Babu has doors shut. He would be the most compassionate person. Even if his enemy is suffering, he will think 100 times for that person. That is that is the Naveen Babu whom I know and the people of Odisha know. Even for an enemy, he'll cry. His heart will beat fast. That's the kind of personality he has, and he is not that hardcore. Person who harbors stuff. It's not true. I have not seen him like that in 24 years. So all those meetings happened between the BJP and BJD. What went wrong? Why didn't the alliance happen? See, there was no meeting between BJD and BJP. There were no meetings? Absolutely. To form an alliance? No. It was between two leaders who wanted to join together for a larger cause. The local leadership of BJP did not appreciate it. And they thought that they are forming government in the state. So that's how it didn't work out. But both the leaders had some noble ideas to come together and work for a larger cause. You pull up a state, you be part of a nation building. That's how they both wanted to happen. But so you think that Mr. Modi deferred to the logic or deferred to the argument of the local BJP unit and didn't go forward with an alliance? I wouldn't know what happened exactly. I wouldn't know what happened exactly. But it was very graceful and the entire conduct was very graceful. So what happens if the BJD wins the state election? Will that mean that at the center you will be again giving outside support or giving issue-based support? See, right now we are in the middle of elections. We have 2 more phases to go. Our political strategy should not be discussed now. We are fighting in the field. You have seen how much of heat is there all over. So let's leave that to a later date. Really, because if one finds it difficult to understand, is this a marriage? Is it a separation? Is it a divorce? No. At least don't take the words of Mr. Rahul Gandhi. Oh. He mentioned it as a marriage. I jokingly said that he should not talk about marriage because he's still a bachelor. With all humility, I would like to say. But your party never thought of having any kind of an alliance with the Congress, right? See, the BJD was formed as an anti-Congress party. Congress, almost till 2000, Congress was a very strong force, 2004, 2008 in Odisha. So CM is very clear. But I recently spoke with Mr. Amit Shah and I asked him, are the doors closed for the BJD? And he said, that's not going to, doors are never closed or something to that effect. Okay, I didn't know that. Yeah, so it seems like, again, as I say, that this is a process, but
the doors are not shut either between the PM and the CM or between the two parties? See, they both share a very healthy and very friendly relationship. They respect each other. But politically, when it comes to elections, we fight it out. The BJP says it's going to double its number in this election. Assembly? Compared to the 2019. You find it humorous, or you find it funny that in the assembly they'll double their numbers? No, they won't double the numbers in assembly. I can give it in writing to you. Okay. They are not. They are not going. They were 22 or something. They won't double their numbers in assembly. I'm 100% sure. And you can record this statement of mine with all humility. How much do you give them? No, I won't give them. I will give BJD how much? BJD is getting more than 3/4 majority. 3/4 majority? Absolutely. And for the fifth time? Yes, and people of Odisha has fixed the time and date of swearing in also. If you ask in street somebody, they will say that June 9th, Naveen Babu will be sworn in as the Chief Minister once again from 11:30 to 1 p.m. Right. Sometimes it feels like, you know, when you see Naveen Babu campaigning, it feels like in 2004 when Vajpayee ji was campaigning, he looked frail, and but the BJP couldn't ever think of having anybody other than Mr. Vajpayee as the Prime Minister candidate, because he was so loved within the party and within the country. But the country somehow realized that to go forward, he's probably not healthy enough. So if I am talking with so much conviction that we are getting 3/4 majority with all the responsibility I have to make this statement, and we have fixed the swearing in, it is based on Chief Minister's popularity and his hard work. So he is the main field area through which everyone else plays. So he is as strong to be a contender for the 5th term. Has he not, or have you not, as the BJD not put in the similar kind of effort for the parliamentary elections like it's doing for the state election? Last time we didn't do, in 2019. So we lost 8 seats or 7 seats. So this time the party is putting focus on both Lok Sabha as well as Assembly. Is it possible to do that? Yeah, of course, it's possible. Okay. It's possible. You spoke about the how the BJD was born. It was for the Odia Asmita. It was to preserve the culture. It's a regional party fighting for the rights of the state of Odisha. Right. I come back to the BJP picking it up now with regard to you and the attacks which have come your way and the attacks which come to the BJD. Does the party feel that it has to go on the back foot all the time in defending your presence, your preeminent position in the party now? If there was no connect with the people, if I am going to be a liability for BJD, I would not have got into BJD and I would not be doing what I am doing. I love BJD, I love Naveen Babu. I can't be doing injustice or dishonest work for the party which Naveen Babu has built over the years. Our 1 crore people are dependent on that party. There are 1 crore members. I'm a sensible person. I would not be doing what I'm doing if there was no connect with the people. And you will see the results on June 4th. People will give a thumping majority to BJD and show that whatever talks they have been doing, whatever criticism they have been doing is completely false, baseless. And people see me as a workhorse of Naveen Babu. That is the only identity I have. I don't have any other identity. I don't project any identity. My identity is this guy works for Naveen Babu and he does good work. That's it. And that is the only connect I have with people. Otherwise, I am not a film superstar or a cricket superstar or a TV star who will go and people will come in, throng you or ask you for whatever. It's not going to happen for a bureaucrat. Why do you think it's become such an issue, Mr. Pandian? Because there have been chief ministers in the past who were not born in the state. MGR was born in Sri Lanka. Jayalalitha was born in Mysore. Both became chief ministers of Tamil Nadu. I think throughout the country there are many instances like that. But without getting into that, I would like to say that BJP has no issue against Naveen Babu. You see what all issues they are raising. Maybe they raise this age and health. Maybe they raise Sri Mandir and Odia Asmita. They raise this outsider issue. These are the issues which they raise. Have they been able to tell anything on the performance of government for which a government is voted for? Odia Asmita, if they talk about, Naveen Babu has done the maximum for what is Asmita, what is pride of a state, what is identity of a state, is 4 or 5 factors. Number 1 is language, your language.
he has done the maximum for the language, Odia language. And he has put a Odia university. He hosted the World Odia Conference, language conference. And Odia as a classical music, Chief Minister wrote 3 times to the central government to make it as major classical music. It was not done. And third, Odia as a language, central government, even though it notified as a classical language in 2014 under UPA time, they have not done anything in the last 10 years, whereas they have done something for substantial for Sanskrit, good for Tamil and Telugu, but nothing for Odia language. So if they talk about Odia Asmita or Odia identity, they should come with their report card and say that what they have done in the last 10 years of their governance in the center. Then third is, how do you treat your leaders from this place, from Odisha? Biju Babu is one of the tallest leaders, not just of Odisha, of the country. Did we honor him with a Bharat Ratna? So many people have been honored with Bharat Ratna. It's okay. They may be meriting that, not getting into that. But from Odisha, not a single person deserved Bharat Ratna, including Biju Babu. He has been honored with equivalent to Bharat Ratna by 2-3 countries. He was a freedom fighter. He was jailed. So when BJP talks about Odia Asmita, they have to tell about what they have done for Odia Asmita in the last 10 years. And fourth is, the state is fighting hard to get coal royalty revised for the last 20 years. Every 3 years, the royalty is supposed to be revised. Now, 2004 was the last time the royalty was revised. The coal companies take about 30,000 crores from the state. The state get only 4,000 crores and lot of pollution. Is it not justified to revise the coal royalty? If you revise the coal royalty, we were talking about the schemes earlier, right? I said that all our schemes put together is only 25,000 crores. Just from coal, the central government takes 27,000 crores. So if you do little more for the state will move fast forward. The transformation will be faster. So these are things which the BJP should answer. In the conversations which happen in this state, the political conversations, it's completely different from what is happening in the rest of the country. You don't see Mangal Sutra, Muslims, that kind of conversation happening here at all. You don't even see any ripples that were caused here as a result of, oh, your inheritance tax will come, this will come. How does Odisha conversations, or how does the conversation, political conversation, how is it so different from the rest of the country? These kind of conversations are insulated by our Naveen Babu kind of political discourse. He has completely insulated. The last time you heard something on religion and minority issues was in 2009 when he snapped ties with BJP, Kandamal riots. After that, he has been steadfast in his commitment for a peaceful atmosphere, peaceful existence between all communities, all religions. So that is one of the hallmark of Naveen Babu's governance. On the one side, you have Naxal issues still in Chhattisgarh. Yeah. You had a double-engine Sarkar for a quite long time. Still, guns are booming, bombs are blasting. In Odisha, by God's grace, Naveen Babu's commitment, everything is stopped. So he insulates from anything which disturbs peace of Odisha. And that is one of the reasons why prosperity also happens. When there is peace, then prosperity happens. You don't get into these issues. And when somebody is trying to make this issue an electoral issue, they won't be able to get benefit. I would say that it's wrong strategy on part of BJP to go on and on these issues. I would humbly say I don't have much experience in politics. What about poll-related violence? You're bordering Bengal. You're seeing the poll-related violence. We'll have one of the lowest poll-related violence anywhere in how do you do that? How is it that Odisha has kept poll-related violence away? Like you said, left-wing terrorism, left-wing militancy has been curtailed. You are bordering several of these states where there is poll violence, huge poll violence. Yeah. That is also to do with the personality of the leader who is leading the state. Number one, he never allows a MLA from the ruling party or MP or any elected political party to interfere in police affairs. He is the Home Minister and he makes it very clear. It will be strictly by merit. Number two, BJD as a political party, he takes tough action if somebody indulges in anything criminal. It is very unfortunate, but the people whom he has sacked from his party for criminal activities, many of them on demand and agitation by the BJP, have all been taken up by BJP. The Berampur MP candidate, he cheated lot of youngsters, taking money in account. He is charge sheeted now. He is the Berampur MP candidate of BJP.
there is one more MLA of BJD who ran over, he drove over 22 BJP karmis. All of them got injured. They were all hospitalized. There was a huge agitation throughout the state by BJP. CM threw him out of the party, saying that he has done an anti-people activity, not anti-party, anti-people activity. He threw him out. BJP did series of agitations. CM police arrested him, was in jail for long, came out and joined BJP, and BJP has given a ticket to him. So you're accusing the BJP of the same thing which the others are saying, which is the washing machine? No, I'm not telling about washing machine or otherwise. I'm just giving you a fact that these two people, one is charge sheeted, the other person is also charge sheeted, I believe. And on both these people, BJP has stalled the assembly for months. Assembly for months. They have done padayatras in the state. They have done every kind of agitation possible. And they have happily welcomed them, garlanding them, and they have given them tickets also. So this politics is something which people of Odisha may not appreciate, and Naveen Babu doesn't allow it to happen, in his party at least. He is very clear, even if somebody has huge winnability, if he is a liability for the people of Odisha, he won't promote him. He will lose that seat. While you say that Naveen Babu has zero tolerance towards any kind of violence and corruption, at the same time, Jay Panda, in a podcast recently, he said that, he accused you of, and I quote, committing hundreds of murders at Naveen Patnaik's behest. He said this in a podcast of Samar Pratap Naik. 100 of murders means what? Then there should be FIRs on me. If there are hundreds of murders, there are courts in the country. I think I think it deserves only a laugh or a smile at the best. That's it. In the sense that it doesn't deserve any answer only. That you rule with an iron hand, that nobody would dare to say anything, and that's because Naveen Babu is blind to everything else. Is that true? Number one, it's a democratic country. Number two, a bureaucrat never can rule. Number three, if a bureaucrat rules, people will throw out the government, kick the government out. You're no longer a bureaucrat. You keep saying it. I'm just 6 months back. He is telling about something of the past. He has been telling about me for the last 10 years, the same thing. And before me, Pyari Babu ko they all told the same thing. Uska pehle somebody else ko. They all think that Naveen, that is the problem with all these people. They underestimate the brilliance and sharpness of Naveen Babu, and that is their mistake. Of judging people, of knowing people? No, he is completely hands-on, and he knows what he is doing and what his government is doing, and people know what Naveen Babu is doing. Yes. We are all here to help him, aid him. All these are to put me down badly in front of people. That's an allegation at the best. Finally, I will ask you that you're saying 3/4 you're going to, BJD is going to win. And now, we'll give invitation to all the BJP leaders who have come and tom-tommed about winning, with all humility and humbleness. Including the chief ministers who have come Absolutely, absolutely. They should all come here and participate in the oath-taking ceremony of Naveen Babu when he signs his 3 signatures. Are you now regretting why you didn't take part in the election, why you didn't file your nomination? Absolutely not. Absolutely not. I'm very clear in what I'm doing. Like last time in your interview, I said, I see the eyes of the bird. Nothing else matters now. I want to be a small part of Naveen Babu when he takes over oath as the 6th, for the 6th term, and going to create a record in the world as the longest democratically elected leader in anywhere, in any part of the world. Thank you so much for speaking with us. All the best. Thank you. Thank you. Pleasure always. आपण समस्तन प्रिय अरुंधति ज्वेलर्स एबे खूब शीघ्र सिल्वर सिटी कटक रे Admission opens for Diploma Engineering in Ganesh Institute of Engineering and Technology at Bhubaneswar. 100% placement with industrial visit. Well-equipped laboratories and ultra-modern library. ये सब मिलावटी मसाले की वजह से है। भारत के शुद्ध और स्वाद भरे तड़का मसाले का इस्तेमाल कीजिए। भारत पंजाबी तड़का मसाला। The taste of New India. रूंगटा स्टील प्रेजेंट्स इलेक्शन एक्सप्रेस। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। Supported by
भारत मसाला, the taste of new India. प्राइम स्वाद विश्वासर। नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस को स्वागत। प्रपात नगरी देवगढ़ में पहुंची इलेक्शन एक्सप्रेस टीम। एठिकार झरणार पानी जतिकी ठंडा, राजनीति सेतिकी सरगरम। निर्वाचन जतिकी पाखई आसुची, राजनीति भी सेतिकी रोचक हेउची। संबलपुर संसदीय क्षेत्र अधीन रे आसुथुबा देवगढ़ विधानसभा भी चली जोरदार लड़ई। बीजेडी बीजेपी मध्य सीधा सड़क प्रतिद्वंदिता होता बेले कांग्रेस भी उद्यम करुछि निज अंटा सड़किबा पई। केमती अच्छी राजनीतिर माहौल, कौन कहते भोटर, केमती चलती निर्वाचन प्रचार, ए सब परखिबा इलेक्शन एक्सप्रेस रे। प्रधानपाट जलप्रपात बुलिले एबे देखिबा देवगढ़ राजनीति केमती चलती। देवगढ़ राजनीति केते सरगरम होची। सांगरे ब्रिजेश भाई अछंती। भाई केमती चलती राजनीति? राजनीति बढ़िया जमिलानी। बर्तमान आम जीवा इलेक्शन एक्सप्रेस आसी वास्तव स्थिति देखा, ग्राउंड को जीवा, नेता कथा हेबा, देखा कौन अच्छे। ओके, आसतु देखिबा इलेक्शन एक्सप्रेस बुलिबा देवगढ़ शहर। देवगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडली। देवगढ़ जिलार यह निर्वाचन मंडली संबलपुर लोकसभा अधीन में आसुची। 1957 गठित यह निर्वाचन मंडली रे थरक पाई बिजु जनता दल 2009 रे विजय हासिल करथिला। एही आसन रे लगातार भावे गणतंत्र परिषद, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी प्रार्थी निर्वाचित होई आसुचंती। 2019 रे बीजेपी रो निर्वाचित होईचंती सुभाष पाणिग्राही। सेपटे 2019 निर्वाचन हारिथिबा रोमांच रंजन विश्वाल को पुणी थे बीजेडी टिकेट देइचंती दल सभापति नवीन पट्टनायक। एही निर्वाचन मंडली रे मोट भोटर संख्या 2,49,504। सेमानक भितरु पुरुष भोटर संख्या 1,24,732 रहिथिबा बेले महिला भोटर संख्या 1,24,756। देवगढ़ रे कौन रहिछि निर्वाचनी उष्मता? बर्तमान आम आसी पहुंचु देवगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडल जो प्रधान पाट रोड रे आसी पहुंचीचु। एवं देखंतु एठी वर्तमान गोटे चा दुकान रे देखंतु लोक जमा रहिछन। देखंतु 10 वर्ष हला बीजेपी वाला देवगढ़ रे भुआ बुलेले। देवगढ़ वासी को डबल इंजिन सरकार मध्य गत होइतला 2019 रु 24 जाके होइतला, किंतु देवगढ़ रो कोनोसी प्रकार से माने विकास कले ना। आमर जीएडी विधायक अच्छा सी दुर्नीति सहित लिप्त अच्छा एवं जहाँ को आम विश्वास करिक आमर जो लोकसभा संबलपुर लोकसभा रे भोट दि जाइथिला नितेश गंगदेव को, सी 4 वर्ष है देवगढ़ माटी रे से पाद दे नाहंती। से मध्य दुर्नीति रे लिप्त अच्छा। लोकंकर सेवा करवा तो दूरर कथा, तांकर निज निज स्वार्थ पई समाने समस्त व्यस्त। देवगढ़वासी निष्पत्ति नहीं सारे। आमर संबलपुर लोकसभा प्रार्थी प्रणव प्रकाश दास बबी भाई को से जड़े टाणुआ नेता बोली समस्ते जानी सारे। समस्ते देवगढ़वासी बबी भाई को शंख चिन्ह भोट देवा सहित आमर देवगढ़ जो विधानसभा प्रार्थी रोमांच रंजन विश्वाल अच्छी भोट देवे। एवं आगामी जो मे 9 तारीख दिन जो शपथ नेबापी जाऊँच आमर मुख्यमंत्री प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 6ठ थर मुख्यमंत्री एवं सारा देश रे
सारा देश में गोटे रेकर्ड सृष्टि करेंगे। 2019 रे बीजेपी रो डबल इंजिन सरकार आसला आमर एमएलए भी बीजेपी रो आसथिले एमपी भी बीजेपी रो आसथिले किंतु कोनोसी काम से माने देवगढ़ पई करू नाहंती इलेक्शन बेले आसचंती एमपी महोदय तापर से कुआडे उभी जाउचंती तेणु एथर आमे चाहूजु देवगढ़ जिल्ला रे बीजेडी रो दुईटी जाको एमएलए एवं एमपी आमे आनिबु। तो देवगढ़ चर्चा चलछि निर्वाचन मंडल रे बीजेडी रो चर्चा चलछि आ दुईटा को बीजेडी आसीबो लोकसभा और विधानसभा रे। धर्मेंद्र प्रधान दुई थर मंत्री थे कैंसी सुविधा करना एवं कौन ट्रेन रो सुविधा कर सेटा भी किसी सब मिथ्या प्रतिश्रुति दे देवगढ़वासी को ठकी चली तेणुक बीजेडी को सब भोट देने पसंद कर। देखु आम तो गत निर्वाचन रे सांसद प्रार्थी आम भारतीय जनता पार्टी को देइथिलु विधायक प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी को देइथिलु किंतु देखिलु जे 5 वर्ष रे सांसद देखा नहीं आओ विधायक हिमिति आखि दोषिया काम भी आमको दिखला नहीं एत निश्चित भाव में परिवर्तन हवा दरकार आओ आमे भावुँ विजु जनता दल कैंडिडेट मान को भोट देव। निर्वाचन जेतेकी पाखौछि देवगढ़ रे जोर धरिलानी निर्वाचनी प्रचार बुली देखिथिला आम टीम। देवगढ़ निर्वाचन मंडल इलेक्शन एक्सप्रेस जिते सबुआड़े घूरी बुलूला हठात बाटर आम पाइलु विजु जनता दल प्रार्थी विधायक प्रार्थी रोमांच रंजन विश्वाल ताका समर्थक सह गाँव गाँ बुलूं प्रचार आम अनुरोध कलु किस समय आम सहित कथा सर केमती चलती प्रचार माहौल आज्ञा आप देखिपे बीजेडी प्रति यही वर्ष जो माहौल अच्छी बोधे मु भी आगु कर्मी हिसाब से लड़ीजु नेता हिसाब से लड़ीजु यही माहौल आगु के आम देखी नु लोकंर जो उत्साह पूरा अपेक्षा कर रोचे घंटे 2 घंटा गोटे गोटे पंचायत रे 1500 2000 2500 माँ भौणी भाई मैंने सबू एकाठी रहीकि आमको अपेक्षा कर रोचे आम पाक जाऊँ समस्त को एकाठी आम रिक्वेस्ट करूँ कारण एबे आउ डोर टू डोर जीवार समय आम पाखे ना कारण बहुत बड़ जगह देवगढ़ जिला आप जानते 70टा पंचायत तेणु से एकाठी होती आम पाक जाऊँ आम रिक्वेस्ट करूँ गोटे जवाब देचु जे जितला प्रथम 3 मास आपणकर प्रत्येक साही को जीवु प्रत्येक गाँव में बसिक आपणकर जहाँ आपत्ति अभियोग शुणु समस्ते आशीर्वाद दौरान एवं किसी आज्ञा आपत्ति कहना नवीन पट्टनायक बहुत काम करजंती खाली समस्ते धन्यवाद जनाउछंती किंतु आमर काम जे जीती सारला परे प्रथम 3 मास प्रत्येक गाँ प्रत्येक साही को आमे जीवो। नवीन बाबू को जो नीति लोक सेवा ही होची राजनीति सेटा को आपण मूलमंत्र करछंती पूरा मूलमंत्र आज्ञा देखंतु 2019 इलेक्शन पर तांकर डबल इंजिन आज्ञा एठी लगी देवगढ़ रे आमर एमएलए एमपी हारी जाइथिले मध्य किंतु जेतकी डेवलपमेंट हेजी तापर 5T सार आसी सीएमओ ऑफिस आसी जेतकी डेवलपमेंट करजंती बहुत जिंस हेजी आमे प्रत्येक गाँ को गले तांकर चिन्ह सबुठी देखा पाऊँ तेणु लोक बहुत आज्ञा खुशी अछंती आ जो अपोजिशन वाला बारंबार हमको जो मिछ कही हमको आज्ञा सरल प्रकृतिर आमर देवगढ़ लोक बोले आज्ञा जहाँ तो सरल प्रकृतिर फायदा नेले नेले लास्ट आज्ञा हमको भकुआ बन दौन गत थर 2019 भिडियो एवं चली जे बारकोड्रु गोटे जलपथ पारादीप को आज्ञा आम एडे भकुआ जे रेंगाली डैम को भांगिक कौन जलपथ करदेव लोक आज्ञा सब बुझीपारे एवं से जवाब से देवाक पड़ो आ से जवाब 25 तारीख दिन भोट बाक्स ही देखा। ओके देवगढ़ सरल भोटर को भकुआ बनई पारिबे नाही विरोधी मिछ प्रतिश्रुति एवं धरा पड़िलानी लोके बुझिलेनी रोमांच रंजन को संगे धीरे धीरे जोड़ीलेनी जोथि पई देवगढ़ विधानसभा आसन में बीजेडी रा पल्ला दिनक दिन भारी हवा को जाउची। नवीन पटनायक जिंदाबाद 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 बीजेडी जिंदाबाद 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 प्रगतिनाथ जिंदाबाद 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 रुनु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एथरक निर्वाचन को निज सपक्ष नेबा पई बीजेपी सबु प्रकार उद्यम जारी रखिछि। लोक समर्थन देवगढ़ जिले में संपूर्ण भाव में एमपी और एमएलए प्रति अच्छी लोक समर्थन जोरदार भाव में अच्छी तेणु आगामी दिन में सुनिश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उभय प्रार्थी एमएलए और एमपी प्रार्थी विजय सुनिश्चित।
की एक ताल किनारे नरम आंखों ने नकाशा, गोद भर रोशन हीरे लिए कई हाथों ने तराशा, बीन दिए उसमें चांद सितारे, जड़ दिए जहां के नूर सारे। तो बिटिया आज जो तुमने पहना है ये आशीर्वाद का गहना है। हैंडक्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936 खिमजी। जदि रूमटा स्टील रे बनी थांता तो रईस से पट दे आसी पारि न थांता। रूमटा स्टील रो एही चमत्कार थरे लागिले चाले वर्ष वर्ष। रूमटा स्टील केएमटी बार एकदम सॉलिड। Dreams University, where possibilities are limitless. सकाळु खोलिले आखि प्रगति प्रगति आपणार अति ओठ चाहे मन चाहे जासुआद नीति क्षीर दही लसी घी घरे घरे अति प्रिय गोलाप जामुन रसगोला पनीर रसीला संज बेले सांग मेले जमी जाए खटी प्रगति 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 प्रगति। Admission opens for +2 science, +3 science, MBA, MCA, ITI and Diploma Engineering in Ganesh Group of Institutions, Bhubaneswar and Chandigarh. हेलो +2 एग्जामिनीज आईएएस ऑफिसर हेबाकु चाहंती कि तेबे टीएसजी गुरुकुल जोग दियंतु +3 टीचिंग सह बाजीराव आईएएस एकेडमी द्वारा कोचिंग पांतु। कॉल 9438782020। आईनीगत एमएसपी नेबार अछि बड़ बापा, साररु जीएसटी हटेबार अछि आ ऋण भी छाड़ करबार अछि। बड़ बापा निज फोन रो बटन दबाइबा छाड़ आ हाथ रो बटन दबा। हाथ जे अवस्था बदलै देबो। Dreams University, where possibilities are limitless. देवगढ़ पर आम टीम पहुंची अनुगुल जिलार छेंडीपदारे। एही निर्वाचन मंडली रे मोट भोटर संख्या 2,07,307। सेमानक भितरु पुरुष भोटर संख्या 1,07,370। महिला भोटर संख्या 69,908। छेंडीपदा संरक्षित आसन रे निर्वाचित विधायक रहिचंती सुशांत बेहरा। एथरक 2024 रे भी सुशांत को पुणी थे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी रो प्रार्थी करिचंती। किपरि चलीछि नेतांग प्रचार पचारि बुझिथिला इलेक्शन एक्सप्रेस टीम। अनुगुल जिलार छेंडीपदा निर्वाचन मंडल में पहुंची इलेक्शन एक्सप्रेस। आम सहित अच्छा विजु जनता दल विधायक पुणी थे होता प्रार्थी सुशांत बेहरा। कथा प्रचार कार्य में बाहर समर्थक सहित केमती चलती प्रचार। छेंडीपदा निर्वाचन मंडल में मानवर मुख्यमंत्री एठी प्रचार कार्य करिक जाई सारला परे स्वतंत्र हिसाब से छेंडीपदा निर्वाचन मंडल चलचंचल हो उठी। मानवर मुख्यमंत्री को समस्त विकासशील योजना जेते लोकों पाखे पहुँची सबू लोक उत्साहित अच्छा। विजु जनता दल विपुल संख्या भोट रे बाजीमात करिवो एथिरे कोनोसी द्विधा मत नाही। गत थर जेतिकी संख्या रे आम निर्वाचन जीतिथिलु तार 3 गुणरु ऊर्ध्व भोट एठी विजु जनता दल नब एवं निश्चिंत भाव में एठी सांसद प्रार्थी मध्य सबुठारु अत्यधिक भोट पाइबे। यही समग्र 7टी निर्वाचन मंडल में जेतिकी भोट प्रदान करेंगे व्यक्तित्व छेंडीपदा निर्वाचन मंडल ताठू स्वतंत्र हिसाब से अत्यधिक भोट दे विजु जनता दल तार छेंडीपदा निर्वाचन मंडल दम देखेबो बोली आशा विश्वास करूँ। हाथ में कम समय रही विधायक भी व्यस्त समर्थक भी व्यस्त जाऊँच एक निर्वाचन सभा को इलेक्शन एक्सप्रेस आम कथा होते विधायक एवं विधायक प्रार्थी सहित आगु को लोकों सहित भी कथा भोटर की मूड भी परीक्षा इलेक्शन एक्सप्रेस रे। छेंडीपदारे बुलुछि इलेक्शन एक्सप्रेस भेटिलु आमे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी अगस्ती बेहरा बाहरुचंदी प्रचार कार्य रे समर्थक गहणे अछि। सर प्रचार कम दिन तो अछि वोटिंग प्रचार केदुर रहबानी प्रचार जोरसोर चली लगातार चतुर्थ थर पर आप निर्वाचन मैदान अवतीर्ण अच्छा सहानुभूति भी किसी गेन कर निश्चित रूप से लोकंर भल पाइबा अच्छी लोक माने गले
भो भोग होइक कांदुछंती माने जे आमे दीर्घ दिन हलनी आमे अगस्त के वोट दउछु बाकी जीति पारुनी गोटे कम मार्जिन रे रहुची आमे जो भाई को आमे एते रिक्वेस्ट कला परे मध्य से माने आगो आसु नथिले एबे तांको आडू से माने सब स्वतःस्फूर्त जोग दउचंती अगस्त बेरा का कॉन्फिडेंस भी बहुत भलो अच्छी कहते आम लगातार 4 थर ललुनी किंतु एथर स्वतःप्रवृत्त समर्थन मिलूची आमको आगु देखा इलेक्शन एक्सप्रेस रे छेंडीपदारे विभिन्न लोकों प्रतिक्रिया नवा प्रार्थी एजेंडा भी शुणुले भोटर को मूड भी परखा इलेक्शन एक्सप्रेस रे भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद अगस्ती भाई जिंदाबाद अगस्ती भाई जिंदाबाद अगस्ती भाई जिंदाबाद आम आसी पहुंची आम निर्वाचन एक्सप्रेस छेंडीपदा निर्वाचन मंडल दुर्गापुर ठारे आम दुर्गापुर ठारे आमर कांग्रेस प्रार्थी नरोत्तम नायक को भेटिचु एने कौन रही निर्वाचन रणनीति आज पचारि बुझीना निर्वाचन रणनीति तो हूँ गुप्त युद्धनीति कह जाएनि कांग्रेस विजयी हम छेंडीपदा निर्वाचन मंडल में ये ट्रांगुलार फाइट हो तेणु छेंडीपदा निर्वाचन मंडलवासी भोटर माने समस्ते हाथ चिन्ह को भोट देवाक जातीय कांग्रेस दल को भोट देवाई रेडी होकर अच्छा। अनुगुल जिलार आठमल्लिक विधानसभा आसन जदियो 2000 मसीह पंचम थर पर बीजेडी कब्जा थिला एवं एथर षष्ठ थर पर दल आशा बांधीची निज दलर विजय नहीं किंतु सबुठु बड़ कथा एठू जो माने बीजेडी जीति 2 थर नगेंद्र प्रधान जीति सी एथर कांग्रेस एमपी प्रार्थी आउ 2 थर संजीव साहू जीति सी एथर बीजेपी प्रार्थी एवं गत थर रमेश साय एथर बीजेपी रे सामिल होती गत थर एमपी प्रार्थी नलिनी प्रधान एथर विधायक प्रार्थी साजिଛନ୍ତି तो एक राजनैतिक गणित भितर आठमल्लिक भोटर क्या पसंद करेंगे कहीं पसंद करेंगे सी हूँ सबुठु बड़ प्रसंग आठमल्लिक रे विकास केते आगे कौन रही भोटर को मूड प्रार्थी एजेंडा कौन ए सब विषय आम जाना इलेक्शन एक्सप्रेस रे। आठमल्लिक विधानसभा निर्वाचन मंडली मोट भोटर संख्या 2,08,136 पुरुष भोटर हेले 1,05,629 महिला भोटर संख्या 1,02,502 बीजेडी प्रार्थी नलिनीकांत प्रधान कथा होईची आम टीम संबलपुर संसदीय क्षेत्र आउ एक गुरुत्वपूर्ण आसन होची अनुगुल जिलार आठमल्लिक विधानसभा निर्वाचन मंडली एवं आठमल्लिक पर समस्त नजर रही गत थर सांसद प्रार्थी एथर विजु जनता दल विधायक प्रार्थी होती पूर्वतन पूर्त सचिव नलिनी प्रधान निर्वाचन प्रचार को बाहर सेकेंड हाफ रे सहित कथा सर निर्वाचन प्रचार केमती चलती सर निर्वाचन प्रचार आमर ठीक भाव चली जो प्रकार आम चिंता करूँ प्लान करूँ ठीक 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 से हिसाब से चली माननीय मुख्यमंत्री विजिट पर लोक मैंने बहुत एनकरेज होती भोटर मैंने एनकरेज होती कर्मी मैंने एनकरेज होती तापरठू आम गाँ गाँ पंचायत पंचायत प्राय बुली सारे आरंभ कलुणी स्ट्राटेजी किसी नुआ अपने प्रचार तरीका आजिकल युवपीढ़ी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया ता संगे आप डोर टू डोर कैंपेन पब्लिक मीटिंग ये सब कर बदली सर प्रचार शैली एथर मु तो भावुची लोकों भितर गला थर मत जो प्रकार भोट देते मोर कार्य देखी देते मो चेहरा भी देखी नथिले ना शुणी देखी नथिले किंतु एथर मोर काम देखी कौन सी पदपदवी न था जो कम कर भी देखी लोक थे पचार आंगुठी टेकी कहते सी जाऊँगी नलिनी प्रधान एथर से मत चिन्हौं अलग लोक छोट छोट पिला कहते नलिनी प्रधान जाऊँगी एठू जना पड़ुची से आग्रह केते नलिनी प्रधान प्रति अच्छी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक प्रति अच्छी 19 एमपी भोट रे आमे देखिलु 52,000 लीड करथला एठी आपण लीड करथले एमएलए भी 40,000 ऊपर लीड रे जीति थिले एथर आपण सौभाग्यवशत हो विधायक प्रार्थी होइचंती ये गोटे एडवांटेज कहि परिबा आपण देखंतु मु सब पार्टी आमर जे प्रेसिडेंट श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश रे सब काम करे जो प्रकार एथर जन आंदोलन गोटे देखा जाइए जो प्रकार लोक मन गोटे उत्साह आसी तो मत लगुच जो आम तारिका प्रतिदिन बदलुची आम घर घर
डोर टू डोर मॉर्निंग वॉक रे इवनिंग वॉक रे खरा दिन चललु लोकों पाखु गलु लोकों प्रॉब्लम जानलु लोकों सहित कहलु अमुक दिन समय सीमा भीतर करूँ करूँ मध्य तो लोकों गोटे आस्था अच्छी आठमल्लिक गोटे जगह जो लोक मैंने भूलती काम को लोक मैंने भूलती जी जहाँ को साहाय्य करिछि एथर मु पचारि से कही आम आज्ञा ऋण सुझा को चेष्टा करूँ हो पारा नहीं एथर भल भाव ऋण सुझीदेव तेणु सेटा जो उत्साह सेटा हूँ बहुत बड़ कथा एथर आम जदि भगवान दयारू मत से बहुत संख्यार भोट्रे जितेबे ता सहित मो सहित आमर संपादक पार्टीर संपादक श्रीजुक्त प्रणव दास ठिया होती तांकर व्यवहार तांकर आचरण लोक मैंने जानी आमर कर्मी माने बहुत उत्साहित जानी जे नलिनी प्रधान जहाँ करिवार टिके असुविधा हे बबी दास से करदेवे उत्साहित जोड़ी शंख नलिनी प्रधान एवं बबी दास तेणु यही जो लोक मन रही सेटा हूँ गोटे उत्साह आपण पचारे युव युव संप्रदाय कथा निश्चय युव संप्रदाय जो बड़े विभ्रष्ट होती चाकरी बाकरी पाइबार कष्ट हो सरकारी चाकरी भारत सरकार तो देवार प्रश्न उठुने एत आम इंडस्ट्री कलु गोटाए भी से देना किंतु एथर आम देचु जे तुम आम इंडस्ट्रियल पार्क करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर रे आम बहुत किसी काम आठमल्लिक करूँ यहाँ हूँ चाषी अंचल जगह कौलिक प्रथा हूँ चाष इरिगेशन सिस्टम जमी रोड सिस्टम आम स्ट्रंग हो जाइए इरिगेशन सिस्टम स्ट्रंग हो गले से माने उत्साह देखेबे केमिति चाषरू उन्नति करिकी काम करेंगे तृतीय कथा हूँ गोशाला गोशाला गोटे एमती जिनस जोटा कि से बहुत अंचल आप देखिए कुकुड़ा फार्म कर गोशाला फार्म करने कई उत्साहित होना प्रोत्साहन देले गोशाला हो पार यहाँ हूँ गोटे फल अंचल बहुत फल एठार भी उत्पादन हुए लिचु हुए आंब हुए पणस हुए बहुत भल भल फल सब ये उत्पादन हुए आमर ये अभाव रही कोल्ड स्टोरेज पिला लगेदेले कोल्ड स्टोरेज हेल्ले से मार्केटिंग ठीक भाव करेंगे तो पिला एनगेज करेंगे मुझे मोपाई करी काउनसिलिंग करी तुम कौटी तुम ठीक फिट हे मुझे परिश्रम करी कैंपेन करी तुम कौटी जा काम कर सो से उत्साह बहुत बढ़ी जाइए। आठमल्लिक केमती अच्छी निर्वाचन माहौल केते जमिलानी प्रचार ए सब विषय कथा स्थानीय भोटर अच्छा आम सहित कथा आलोचना करवा केते जमिलानी प्रचार सर आमर प्रिय मुख्यमंत्री 2 दिन तले आठमल्लिक आसी तार जो प्रभाव इखनी सब भोटर भाई मान भी पड़ुची ए ठू जेड से सब किसी कर बीजेडी हावा रोचे सब आठमल्लिक रोचे आमर विधायक प्रार्थी नलिन बाबू लोकसभा प्रार्थी आमर बबी भाई अच्छा प्रभाव एवं शंख चिन्हर तो चली प्रभाव चली कि प्रतिक्रिया ना जमिला कि नहीं प्रचार 25 तारीख भोट आपणकर केते जमिला प्रचार जोरजार चली आज्ञा आ बीजेडी दल जेकोसी स्थान को आम जाऊँ गाँ हो सहर हो सब स्थान में बीजेडी को समस्ते भोट देवाई समस्ते इच्छुक अटंती आमर विधानसभा अच्छा नलिनी बाबू आउ से एमएलए बीजेडी से ठिया होती बबी भाई से एमपी रे तो विपुल संख्यार लास्ट अपेक्षा ये वर्ष बहुत भल हम आम रेजल्ट एथर षष्ठ थर पुणी मुख्यमंत्री जाऊँ आमर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आउ भल विपुल मात्रा बीजेडी तो माने फंडा भल अच्छी बोली जहाँ जना पड़ुची भल हम रेजल्ट भल हम नेक्स्ट समस्त विभिन्न ढंग कर डोर टू डोर कैंपेन बाइक रैली रोड शो चलती सब दल रोड शो चलती प्रचार चलती आठमल्लिक इलेक्शन एक्सप्रेस में बुलूले विभिन्न प्रतिक्रिया नौले रूंगटा स्टील प्रेजेंट्स इलेक्शन एक्सप्रेस रूंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड सपोर्टेड बाय भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया प्राइम स्वाद विश्वासर सोने की एक ताल किनारे नरम आंखों ने नकाशा गोद भर रोशन हीरे लिए कई हाथों ने तराशा बीन दिए उसमें चांद सितारे
जड़ दिए जहां के नूर सारे। तो बिटिया आज जो तुमने पहना है ये आशीर्वाद का गहना है। हैंडक्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936। खिमजी। ओडिसा रे हमर चली सफल इलायची सबु गली सबु छक्कारे सफल महकी जाए रे। पूरी रो नौका भी सफल रो सद बाछे रे। प्रतिटी ओडिया सफल रो कथा कहे रे। सबु समय ओडिसा रो स्वाद चाखे सफल रो। Dreams University, where possibilities are limitless. सह प्रायोजक ओडिया मैट्रिमोनी, बिगेस्ट मैट्रिमोनी सर्विस फॉर ओडिया।